So, good morning, everyone, and Happy New Year to all of you. As in the last session, we talked about kind of a bubble sort, we talked about insertion sort. At the end, someone asked me the question that which sort is to be used when. Obviously, I answer it, but definitely we will look at the comparison of multiple sorting algorithms when we learn all six sorting algorithms. Right now, we discuss only three, so there are three more yet to come. So once we finish with the other three sorting algorithms, probably we can discuss there what basically the difference, or like which one is better in which scenario. Yes, we will talk about. If I at all forget, remind me. Anyway, then I'm just continuing further. Then we talked about kind of linked list. Yesterday we tried to go absolutely slow, where we tried to make how to go with like a singly linked list. And to make a singly linked list, we have written certain functions. The functions that we written was like kind of a display function, add first function, add last function, add at given position function. After that, we had like a delete function, at a position, delete first, delete last. Probably I left it for you. So yes, we will quickly go back. We will talk about the delete last function as well, if at all you could not make or some of you could not make it. So we will talk about that. And after delete last function is done, then we will move on to the next type of linked list. For today's lecture, it is really required that yesterday you people have taken time, you people have drawn diagrams once again, and from the diagram you are able to build your own code. So that visualization of diagram and then building a code, I know that it takes time, but I guess you had enough time yesterday, that whatever time that you get, so that is more than sufficient. If you could really went through all the algorithms and do it one by one, I believe today you should not have any problem. If at all you had done some shortcuts yesterday, you need to pay off and nothing much I can do for that. Anyway, I'll just go ahead and we'll quickly talk about the delete last function. The delete last function, if you want to implement it, yesterday I told you that we can always follow the two pointer approach, even though we can do it as a single pointer as well, I know, but still, for sake of clarity of a code, to make code more readable, not the fancy one, I'll go for like a two pointer approach. And the two pointer approach, what all we need to do, I'll say that one is trav pointer and temp pointer, that blue color temp pointer is running behind it. So we need to go step by step. We need to go to the last node. Yesterday, the deleted position, we done a counting. I is equal to 1, I is less than something. But now we do not really want to do the counting. We want to go to the last node. And how do I go to the last node? So to go to the last node, all we need to do is that go ahead. We need to so temp is equal to trav, temp is equal to trav, and then trav is equal to trav's next. Again, temp is equal to trav, and trav is equal to trav's next. Again, equal to temp is equal to trav, and trav is equal to trav's next. Now, somewhere you find that the trav is reached to null. Sorry, my mistake. Somewhere where you find that the trav is reached to the last node. If at all you find that the trav is reached to the last node, this is the node that you want to delete. And if this is a node that you want to delete, if this is a node that you want to delete, what you should do? What you should do? Can you please tell me diagrammatically what should happen in this case? अगर आपको लास्ट नोड डिलीट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? Obviously उसका जो previous node है, उसका जो previous node है, that should become null. So it should point to null. It should not continue on to the next. That is what all you need to do. And that is the reason I said that you can go for two pointer approach. That makes it more readable. I repeat once again, things can be always done using a single pointer as well. Absolutely no problem. So I'll repeat it once again on paper. All I need to do is that I need to take two pointers. The pointer one, where the trav pointer through which I want to go to the last node, but the temp pointer I want to make it running behind it. So every time before I take trav to the next node, take temp is equal to trav.
and then say trav is equal to trav next. Temp is equal to trav, and then trav is equal to trav dot next. You continue traversing until you reach to the last node. By the way, which node is said to be the last node? The last node is one whose next contains null. So I understand that this is a place I need to wait. This is a place where I need to stop. I do not want to traverse anymore. But if this node is a trav node, then the node behind it, temp node, it is just behind it. If you want to delete the last node, if you want to delete this last node, what should happen? The temps next should no more point to the trav, and the temps next should point to 0. And if you have done this, that is more than sufficient. You understand it very well that the trav pointer, the trav node will get garbage collected, isn't it? So that is all about logic. Let me just quickly go back. I'll purposefully write it in yesterday's code only instead of coming up with the new code altogether. So delete last, and then the code sharing that I have made on, it is for today. It is not for the yesterday's code. Anyway, I'll first finish this. आपने वैसे भी already कर लिया है, so you don't need a code sharing with this. Okay, it is a delete last function, and into the delete last function, I'm saying that I need two pointers. One is temp pointer, which I'm saying null, trav pointer, which I'm saying head. So what I need to do, the traverse till last node using trav, and and run temp pointer or temp behind it, right? This is what all I need. How do I do that? The last node, I understand trav dot next is not equal to null. Trav dot next is not equal to null. I can simply say trav is equal to trav trav dot next. Trav is equal to trav dot next. That's it. It is going to the last node, and that is fine. But wait, but before I go to the next node, before I go to the next node, every time I want to say temp is equal to trav. So this way, I'll be able to reach to the last node, and temp is pointing to the second last node. Now what all I need to do? I need to go ahead and I need to add one more point. One more point, I need to delete the last node. So when last node in the sense now trav is deleted, the second last node, which is probably in this case temps, next should be null. And that is what all I understand. All I need to do is that temp dot next is equal to null. Note that last node trav will be will be garbage collected after this will function. So no pointer is pointing to that. So that is what all I need to do. Simply delete function. But again, we have not yet considered the special cases. So sir, what is special case over there? What could be the special case over there? A special case where my linked list is empty. If linked list is empty, if linked list is empty, if there is no node available, if there is no node available, how do you delete the last node? A node ही नहीं है, तो delete first and delete last doesn't make any sense. So definitely, I'm saying that this is a special case. A special case. If list is empty, if list is empty, what I want to do? Just go ahead and throw the exception. Throw the exception. This is what all you can do. So I understand this very well. Let us just go ahead and try to do that. Go ahead and try to do that. Ultimately, I can check it over here. I'll write it over here. The special case, if list is empty, throw exception. And how I can do that? If head is equal to null, throw new runtime exception. Done. Where I can simply put a message, list is empty. And other way around, if it is not, if it is not, the general case, it is simply delete the last node. That's it. So that is all we can do. Can we try to call this function? Is definitely we can try to call this function. And how we can try to call this function is over here. Instead of delete first, I want to make a call to the delete last. I said, to be frank,
Even deleting at a position also, there is a possibility that it might throw the exception. So if at all it is there, if at all it is there, we can always write a try catch for that as well. And we can even print a message over there if there is any exception, right? So all we are taken care over here. Let us just go back, try to run the program once, and then we will go on to the, like today's code as such. So what I want to do is that I want to add the node. Yes, 10, 20, 30. So three nodes are there, and ultimately I want to display the linked list. Yes, 10, 20, 30. My linked list is looking good. 10, 20, 30. Let me try to delete the node, last node, 6, and node is deleted. Okay, yes, 30 is deleted. Again, you can say 6, 20 is deleted. Again, you can 6, this one. Now there is nothing left in a linked list. So your linked list, oh sorry, I say del last. Something went wrong. I hope something went wrong, isn't it? Yes, one more special case is there. What if one more special case is there? If your linked list has got a single node, then your code is not working. So why that code is not working? Have a look at this. Let me go again on a diagram. Let me again go on a diagram. This was like one special case was already there that we already talked about, and we had already written that. One more special case that I need to handle, that if at all the linked list has got only one node, if linked list has got only one node, 100, let's say whatever, data is not important. Now in this particular case, you understand it very well. In this particular case, take a look at this. You understand very well. In this particular case, if you want to delete a node, you need to modify the head pointer as well, and you want to make head is equal to null. You want to make head is equal to null. But the code that we have written, the code that we had written over here, we have nowhere modified the head pointer, and that is the reason the additional special case that I need to consider. What is special case? A special case 2, if list has only one node, only one node, make list empty. And how do you make the list empty? Just by making head is equal to null. Head is equal to null, which will simply, so all I'm trying to do is that I'm just trying to make this as null so that this node will be automatically deleted. And that is the only thing we need to do, nothing more than that. So yes, one special case is missing. So let me go ahead, write even a second special case. What is second special case? The special case number 2, if list has single element or single node, you can say single node, that make head null, make head null. So how do I check that? If head dot next is equal to null, if head dot next is equal to null, I understand that it is going to be a single node, क्योंकि पहले नोड ए हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, पहले नोड के नेक्स्ट में ही नल आ गया, इसका मतलब ओके इट इज नल. What is to be done? Simply say head is equal to null, and that's it, nothing much to be done. Otherwise the rest of the case, yes, this is definitely available, is the general case. So now will it work? Let's go ahead, try it. So you do bit of paperwork, you run your program, type your program, you automatically understand what should be special cases. Again, special cases are not to be by headed, so you can always start with the generic code first. You can guess few special cases. Even though you miss a special case, there is not a problem. When you write a program, you can check it once again. If everything is going well, if something is missing, you can think on it. You can always alter the code. No one is stopping you, right? So I'm just going ahead. So 10, 20, I have just added two nodes, that is sufficient. Let me say 6, delete last. So 20 is deleted, 6, okay, that is good. And now even 10 is deleted. And then abhi ek bhi node nahi hai, it should definitely throw the exception. And yes, it is throwing an exception. I'm printing it, list is empty. That is good. So program is working well, right? So these are
what I can say, the special cases to be considered, and things are going quite well. So you are able to see that. Obviously, at the end, I will definitely share this blog code onto the Git. Today, since I want to work on a day 3, I just thought that कि ओल्ड प्रोग्राम में इसको पूरा करते हैं, तो ये आपको कोड शेयरिंग के ऊपर नहीं दिखाई दे होगा, मैंने अभी वहां पर कॉपी कर दिया है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. अदरवाइज you can always do it at the end, and I'm very sure many of you had already completed this. Done. So जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं किसके, सिंगली लिंक लिस्ट के, that we have taken a look at. Now I had few questions onto this on primary functions only. What is the time complexity? The code, all codes that you have got, yesterday's code, today's code. So what all is the time complexity? I was just talking to some of like February batch students somewhere. So a few students called me and asked them that, okay, what you are doing right now? So some of them that, "Nee, sir, we are preparing on data structure exam." So what you preparing for data structure exam? No, no, sir. We are just only talking about कि कौन से algorithm में कितनी time complexity आएगी. So we are doing at first what will be time complexity. If you say at last what will be the time complexity. तो सर ऐसा क्यों? नहीं सर, क्वेश्चन आते हैं ना उसके हिसाब से. तो एक बार it is worth going back, recap, understand what that algorithm is, and then we need to do that. Correct? So I'm just trying to tell you that exam point of view, time complexities are important. That is the reason first lecture we have talked about that. Yes, every function will have a different time complexity, and that is the reason we should be discussing कि कौन से फंक्शन को कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है. मैं अभी सारे कोड फिर से नहीं लिखने वाला हूँ. गिट के ऊपर ऑलरेडी कोड अपलोडेड है आपके सामने. तो आई वुड ऑलवेज से दैट कि यू कीप अ कोड ओपन टू यू, कीप कोड ओपन टू यू, look at the code, and then we can talk about quickly one after another. The very first thing, by the way, what we are discussing a singly linear list. A singly linear list, the list looks something like this. Head pointer pointing to the first node, that is pointing to the second, that is pointing to the third, that is pointing to the fourth, and the last node is pointing to null. That's it. So this is a kind of a linked list that I'm trying to make. Now for such sort of a linked list, what would be the time complexity? Yes, let us get started and one by one. The very first, the time complexity of पहला फंक्शन हमने कौन सा लिखा था, डिस्प्ले फंक्शन. सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्प्ले फंक्शन. ऑब्वियसली अगर 10 नोड होंगे तो आपको 10 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा. 10,000 नोड होंगे तो आपका लूप 10,000 बार चलेगा. सो डेफिनेटली डिपेंड्स on how many nodes that you have got. So directly proportional to the number of nodes, I can simply say that it is O of n. Let me go ahead. What is second? The second function that we tried was add last function. What we had done in add last function, see the code आपके सामने, comments आपके सामने. So we are first saying that, and always talk about general case. Do not think about the special cases. General case, you need to first traverse till the last node, and then in the last node you want to add a new node, correct? But then traversing till last node, again the loop is involved. I can simply say that time complexity is once again O of n. Third one. The third one we can talk about, I guess, add first function. Add first function, the add first function where you find that there is no loop involved. अगर आपकी लिंक लिस्ट के 10 नोड की लिंक लिस्ट है या 10,000 नोड की लिंक लिस्ट है, adding a node at the beginning always takes the same time, constant time. You can simply say that it is O of 1. You can continue further, and we can talk about something called as a insert, or let's say add at position. So what about add at position? The added position, to be frank, it depends on the position where you are trying to add, isn't it? So ideally speaking, I can say that it should be the O of position. Ideally speaking, it should be the O of position. So position at which you want to add, probably those many times the loop is going to run. But sir, what about with respect to number of elements? Okay, if you are talking about with respect to number of elements, then you need to take kind of average, जैसे हमने linear में किया था, and then on an average we can say that it is O of n by 2. O of n by 2 कि यूजर randomly अलग अलग जगह पे ऐड कर रहा है, so average लेके हम लोग बता सकते हैं it is of order of n.
सो टू बी मोर स्पेसिफिक, इट इज अ बेस्ड ऑन अ पोजीशन। जो आपका पोजीशन होगा आपको उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। टू बी फ्रैंक, नॉट उतना, दैट -1 आपको शायद उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बट दैट इज स्टिल फाइन। दैट इज व्हाट ऑल यू कैन डू। यू कंटिन्यू फर्दर। कहाँ पर गया? फोर्थ हो गया। A fifth function. The fifth function that we tried was del first, I guess, and time complexity of del first. Del first, take a look at the code. Oh, we are not traversing at all. We are simply saying head is equal to head dot next. And if you are doing like that, then the time required is always constant, irrespective of how big your linked list is. Okay, that is good. And then you can just carry on further with something, let's say del last. Del last, just now we written. Del last, we need to again traverse till the last node, और second last node के next में हमको null करना है. So we can always say it is O of n. And on the similar line, we had written yesterday something called a delete at position. Delete at position again actually depends on what position that you are given. But if you do not want to go by the position, sir मुझको position में interest नहीं है, just tell me in terms of number of elements, then on an average I can say that it is O of n. That is absolutely possible. If you at all go with something called a delete all, now delete all, it all depends on implementation. It all depends on implementation. O of 1, I'm saying that it is for Java. It is for Java, जहाँ पर आप लोग directly you are using the garbage collector. अगर आपने ये कोड कभी C++ में अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर किया है जहाँ पर आपको मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है, अगर आपको मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है हर एक नोड की एक्सप्लिसिटली, देन यू नीड टू एक्चुअली गो विद लाइक O ऑफ n, क्योंकि आपको हर एक नोड को वन बाय वन डिलीट करना चाहिए. नाउ दीज आर द स्पेशल at least the minimal functions we should be always knowing कि what are the time complexities. तो सर आप ये हर एक लिंक लिस्ट में बढ़ाओगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है. You have just got the idea of one linked list, that is more than sufficient. But sir, is there any way that I can make this linked list bit more efficient, in few cases? Suppose that what if I have got a case, what if I have got a case जहां पर मुझको एडिशन एट द स्टार्ट और एडिशन एट द एंड बार बार करना पड़ता है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जावा का कलेक्शन देखते हो, जावा के कलेक्शन में जो ऐड मेथड है वो बाय डिफॉल्ट एट द एंड ही ऐड करता है, करेक्ट? सो इफ एट ऑल आई एम वरिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ सिनारियो कि जहां पर मुझको एडलास बार बार करना पड़ता है. अगर आपको एडलास बार बार करना पड़ता है एवरी एवरी टाइम, यू आर ट्रैवर्सिंग till that last element and then adding there, I'm saying that this may not be a very good idea. This may not be a very good idea. So sir, what we need to do? Is there any trick that we can play? Is there any idea that we can follow? Yes, definitely you can have some tricks. Definitely you can have some ideas. And the idea that is very commonly followed is that we do not make a linked list with only head pointer, but we also make a linked list with the tail pointer as well. So we try to maintain not one pointer, but we try to maintain two pointers. One is a head pointer, another is a tail pointer. And what is the advantage of tail pointer? The typical advantage that you get it with the tail pointer is that you want to add a node at the end. You want to add a node at the end. Adding a node at the end becomes really fast. So how adding a node at the end becomes very fast? Now you understand that in this particular case, डायग्राम आपको सामने दिख रहा है. अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझको अभी ऐड लास्ट करना है, सी इट केयरफुली. अगर मैं कहता हूं कि मुझको ऐड लास्ट करना है, अगर आपको ऐड लास्ट करना है तो यू फाइंड इट लाइक से ये 50 है आपका और 50 का नेक्स्ट अभी नल है, दिस इज न्यू नोड. तो अर्लियर हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करते थे, और उसके बाद में हम लोग पहले लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करते थे और उसके बाद में हम लोग उसको अटैच करते थे. लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गॉट पॉइंटेड टू द लास्ट नोड. Since already you have got pointed to the last node, see it carefully. Already you have got pointed to the last node. All that I can do, all that I can do,
See it carefully. I need to just say one thing. Just point this to this. What I'm saying, just point this to this, one step, and second step, make the tail pointing to the new last node. So hardly 2 lines of code should be more than sufficient, I guess. Tail dot next is equal to new node, and then you can say that tail is pointing to a new node, isn't it? Yes, that is more than sufficient. That is more than easy job. And what you achieved with this implementation? With this implementation, I said that my time complexity is now changed to O of 1. तो जहां कहीं पर भी आप लोग ऐसी लिंक लिस्ट बनाना चाहते हो, जहाँ कहीं पर भी आप लोग ऐसी लिंक लिस्ट बनाना चाहते हो where you are saying that कि I want to add the node at the end, and that is very frequent kind of operation. Now every time you writing a normal linked list, every time you are traversing there and then adding it over there may not be a good idea. May not be a good idea. At that time, you should strictly focus that you should create another tail pointer, and we need to manage that. I repeat once again. What I said is that if you take a look at this, you want to add a node at the end, you want to add one node at the end, all efforts that we are doing is that we need to take a trav pointer, and then we need to traverse, and then we need to traverse till the last node. And then we need to traverse till the last node. Once we traverse the last node, then we say that trav dot next is equal to new node. Definitely this works. Again, it is not about the output. But if your linked list has got 1 million nodes, you need to first traverse through that 1 million nodes, and then you are adding a new node. It is time consuming. I'm saying that the time complexity is kind of O of n. तो सर कोई आसान रास्ता है? आसान रास्ता ये है, why don't you go ahead and you add a tail pointer with it? You add one tail pointer with it. So within a linked list, do not maintain only head pointer. You also maintain a pointer to the last node. Also maintain a pointer to the last node. So every time, every operation that you're doing, you need to keep a track. The last node you need to manage, the tail pointer you must be managing. And then if you have got tail pointer, what is the advantage that you get? The advantage that you get is that adding a node at the end becomes super fast operation. Super fast operation matlab, you simply create, let's say new node object, you simply create a new node object, then अब आपको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है. Already you have got a pointer to the last node. If you already has got a pointer to the last node, all you need to do is that last node के next में you can keep a new node pointer. Sorry, my mistake. Last node के next में you can keep a new node pointer. That's it. So ये वैसे भी idle last हो गया. But you need to remember that tail pointer should always point to the last node. So अगर आप लोग idle last कर रहे हो, then it is your additional responsibility that you make tail is equal to new node. So hardly 2 lines of code is more than sufficient to add the node at the end of the list, irrespective of how big your linked list is. Whether it is 10 element, whether it is 10,000 element, the time required is going to remain same, and then that is O of 1. Namrata, is that fine? Yeah. Someone is suggesting me that this will also speed up del last operation. This will कहाँ पर गया अमित? It is tell dot next is equal to new node. The next is a pointer to the node. Amit, next is a pointer to the node. Next is not pointer to the value. Our value is of integer type. करेक्ट. तो हमको पॉइंटर के अंदर हम लोग इंटीजर नहीं रख सकते. पॉइंटर के अंदर हमें पॉइंटर रखना है, रेफरेंस ही रखना है. राइट. हाँ, मैं कहाँ पर था? नो प्रॉब्लम. हाँ, तो समवन इज सजेस्टिंग मी, मेरे को 2 बार किसी ने तो पिंग किया, so इससे डेल्लास भी फास्ट होगा. डू यू रियली बिलीव दैट डेल्लास विल बी फास्टर? टेक अ लुक एट द डायग्राम and tell me what the do you believe that डेल्लास will be faster with this? क्योंकि डेल्लास्ट में प्रॉब्लम ये है, डेल्लास्ट में आपको लास्ट नोड डिलीट करना है, नो डाउट ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम आपको प्रीवियस नोड मॉडिफाई करना है. सो राइट नाउ यू हैव गॉट अ पॉइंटर टू द लास्ट नोड, you do not have a pointer to the second last node. अगर आपके पास सेकंड लास्ट नोड का पॉइंटर होता तो शायद डेल्लास्ट फास्ट होता, शायद डेल्लास्ट फास्ट होता. अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है अदर देन लिटरली ट्रैवर्सिंग
till the second last node, traversing till the second last node, making its next is equal to null, making its next is equal to null, and then making tail pointing to that second last node. So यहाँ पर ये आपको प्रोग्रामेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपको प्रोग्रामेटिकली मैनेज करना पड़ेगा, आपके पास इसके लिए कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं है, यहाँ पर आपके पास इसके लिए कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं है. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर. करेक्ट. सो डेल्लास का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट विल स्टिल रिमेन ओ ऑफ एन ओनली, क्योंकि अभी भी आपको सेकेंड लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है. हम लोग को सिर्फ एक ही एडवांटेज मिल रहा है, हमारा जो एडलास्ट है वो एडलास्ट फास्ट हो रहा है, और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर एडलास्ट ऑपरेशन इज यूजफुल, एडलास्ट ऑपरेशन इज यूजफुल. तो सर एक जस्ट मॉडिफाइंग एडलास्ट विल डू? To be frank, no. You need to always go through almost each and every function, and you need to cross check whatever I'm doing, is it really useful or not. So let us just go ahead. Let us just go ahead and I'll come down to the today's code, and we will do a little changes here and there. A few functions I will do, one or two functions, and few functions I will leave it for you. Sorry. जब तक ये चालू हो रहा है, कहाँ पर गया? हो गया, चलो. देयर वाज वन क्वेश्चन समवन वाज आस्किंग कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, एंड दे आर नॉट मेंशनिंग वेदर इट इज बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एट दैट टाइम व्हाट शुड वी कंसीडर? यूजुअली जब एग्जाम में ये मेंशन नहीं होता है कि विच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू बी गिवन, यू शुड यूजुअली टॉक अबाउट द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आई होप दैट इज ओके. सो मेक अ नोट, अगर एग्जाम में आपको पता नहीं है विच वन इज टू बी यूज्ड, और इट इज नॉट मेंशन कि हमको बेस्ट केस चाहिए, हमें वर्स्ट केस चाहिए, एट दैट टाइम द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली फॉलोड एवरीवेयर. न्यू Java project. So I'm going ahead. What is that? Singly list once again, because now this is a single linked list with the tail pointer. Don't create this. Okay. New class. New class. I'm writing, let's say, singly list once again under a package. Let's say Sunbeam. Okay, no problem. And inside this, I just copy pasted the previous code. Just copy pasted the previous code. अच्छा, comment भी copy paste हो गया. Yes, this is like a 1st January. It's good. चलो, let us continue further. Let's continue further. Error क्यों दिखा रहा है by the way? Copy paste उसको अच्छा नहीं लगा? चल रहा है, पिछले साल का नहीं चाहिए, इस साल का नया चाहिए. Okay, sorry. The name of a file should be singly list main. Main जिस क्लास में होता है guys, उसका नाम चाहिए. What went wrong? कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ. एक काम करता हूँ. New class singly list main. Done. अब ठीक है. All right. And now inside this, yes, I seen somewhere there are issues. Let us go ahead. Package name is Sunbeam. That is all right. I done import statement. That is also right. And then inside this singly list is a class that I have copied from the previous. That is also right. The singly list main, that is also all right. And at that, whatever the extra singly list main is there, I need to remove that. And this is done. So I hope now it is all right. But then over here, I want to create a linked list with the head and tail. So let me write somewhere. Here we are talking about a singly, we are talking about
सिंगली, अरे चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ क्यों हो रहा है। सिंगली linked list with head and tail pointer, pointer का हो, reference का हो, whatever your choice. All right, this is done and then I'm going ahead one by one. तो यहाँ पर changes क्या करने पड़ेंगे? You see that, do you believe that any changes are needed in a node? node के अंदर किसी कोई changes की जरूरत है? Not really. The node class still remains same. I hope you got enough time to go through the node class and see that. वैसे छोटा सा class था. But then, do we need any change into this? List class के data members में कोई change चाहिए? Definitely. अभी यहाँ पर सिर्फ head pointer है. I want to go ahead and I want to simply say private node tail. चलो, I also added a tail pointer into that. Obviously, if you are added both the pointers, you need to take care. Initially, you want to make head is equal to null, even tail is equal to null. That is good. What about display function? Do you believe that any change needed in a display function? Do we need any change in a display function? You can take a look at your linked list. ये linked list अभी भी आपको head से चालू करना है और आपको null तक जाके खत्म करना है. So आपको अभी भी head से चालू करना है, अभी भी null तक जाके खत्म करना है. I really don't think कि इसके अंदर कुछ करना चाहिए. Go ahead. As far as add first is concerned, do we need any change? Wait. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. Please note, what is the special case of add first? There was one special case of add first, जो हमको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी. If list is empty, don't you think that for the empty list, what about tail pointer? क्योंकि empty list जब होगा, जब लोग पहला नोड ऐड करोगे, the first node itself is the last node. Don't you think that? So if list is empty, the first new node itself is last node. So some extra efforts that you need to take over here. What extra efforts that you need to take over here? You need to also say tail is also pointing to the new node. A tail is also pointing to the new node. So अगर आपका link list empty link list है, अगर आपका link list empty link list है, whatever new node that you have added, whatever that new node that you have added, now you need to take care this one itself is there. So I can always check that if head is equal to null initially, if head is equal to null, I can say that वैसे head is equal to new node वैसे भी हम लोग हैंडल कर ही रहे हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. But the special case to be considered over here, that if head is equal to null, then the new node itself is going to be my last node. So मैंने कहा ना, जब भी हम लोग लिंक लिस्ट में एक नया पॉइंटर ऐड करते हैं, you need to think in every function कि क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल केस होगा, क्या हमें यहाँ पर भी किसी के साथ डील करना पड़ेगा. So we need to talk about it. Anyway, so that is like additional case we need to consider. कोई बात नहीं, we can continue further. What about add last? I guess now add last is something that I want to make it really fast. Special case, if list is empty, make new node as a first and रुको, not only first as well as last node of the list, isn't it? How do you make it? So head and you simply say even tail is equal to new node. This is very simple. So मेरा पहला नोड ही, जो पहला नोड आ रहा है, हेड भी उसी को पॉइंट कर रहा है, टेल भी उसी को पॉइंट कर रहा है. बट इन जनरल केस ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड, ये वाला जो फंडा है इसकी कोई जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज दैट, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, एड न्यू नोड टू द नेक्स्ट ऑफ last node means what, tail node, and then update tail to new node, isn't it? Now these are like two lines of code that I need to write it. Simply go ahead, write it tail dot next is equal to new node, and then you continue further. What is next? What is next? You simply say tail is equal to new node. I guess these are the exactly two lines we were writing 2 minutes back over here. Tail dot next is equal to new node and tail is equal to new node. Now that is what all you need to follow.
nothing much. Oh, this is done. So और कुछ करने की जरूरत है? I really don't think so. So मेरा add first function, add last function, and display function. At least these three functions we have taken care. We have taken care. Let us just go back and try to run it. Let us just go back, try to run it. Please note, बाकी सारे फंक्शन चलेंगे, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ. तीन फंक्शन जो पहले थे वो हमने चेक किए, एंड आई बिलीव दैट ये तीन फंक्शन चल जाएंगे. Just rearrange it so that I can. Done. So let me say add first, let's say 2. Add first, I'm saying 10. 2. Add first, I'm saying 20. 2. Add first, I'm saying 30. 10, 20, 30 मैंने add first fashion में add किया है. Add first fashion में add किया है. So I find that it is 30, 20 and 10. Okay, that is good. What about add last? Is add last is working? It should. A 3, I'm saying 40. 3, I'm saying 50. 3, I'm saying 60. 40, 50, 60, I have added at the end. Have you added at the end? Yes, you find that the 40, 50, 60 is added at the end of the list. That's it. And now nothing much you need to do into this. I hope this is comfortable, and rest I'm giving it as your lab work. This is a lab assignment. Lab assignment. What is lab assignment? Do necessary changes. Do necessary changes in rest of singly linked list functions, methods. Do necessary changes in rest of singly linked list method to consider tail pointer. तो सर ये changes हम लोग कैसे करेंगे? Go ahead, add diagram, draw the diagram and see कौन से special case में आपको tail को भी consider करना है, और जिन जिन special case में आपको tail को consider करना है, do the necessary modifications in place. Do the necessary modifications in place. Chalo, Rajendra is having some question. Can we see performance anywhere in Eclipse? Unfortunately, no, Rajendra. By default, Eclipse doesn't show you any performance. There are specialized tools available in the market. What we call it the profilers. So profilers नाम के tool आते हैं, and the profilers tool can help you for taking a look at the memory, taking a look at the time that has been taken, even for the individual function उसने कितना time लिया वगैरह वगैरह. But again, they are never showing you the time complexity. They will always show you the time, the actual time that is required. And अब जितना छोटा लिंक लिस्ट हम लोग ले रहे हैं, हार्डली वी आर डीलिंग विद द लिंक लिस्ट ऑफ लेट्स से 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स. सो 3-4 एलिमेंट की लिंक लिस्ट में आपको प्रोफाइलर के ऊपर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आने वाला है. डिफरेंस समझ में आने के लिए यू शुड रियली हैव अ लिंक लिस्ट ऑफ 10,000 नोड्स, 20,000 नोड्स, एंड देन यू कंपेयर. देयर यू विल बी एबल टू एक्सपेक्ट, हाँ सर ये थोड़ा सा बेटर चल रहा है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. Is this clear to everyone? You have any questions, you are welcome. I was just trying to tell you the improvements in a single linked list and talking about the time complexity and how we can modify that. Again, these are the interview questions. I repeat, these are the interview questions. So interview में से बहुत बार होता है that they are asking you, write so and so function for a linked list. You go ahead, you draw some diagram, you come up with some sort of a function, you tell that, okay, this should be the function. Interviewer is very happy that you are able to write the code. But then definitely after that, his next question will be, can you improve on this? Is there any possibility that you can speed it up? And then now you need to rethink, अच्छा यार ये मैंने लिख तो दे दिया, but then अगर मुझको इसको speed up करना है, तो what all other alternatives that I have got? What all other alternatives that I have got? And then again you need to go back and you need to rethink and then reorganize, and then you need to tell that. And that is the reason ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ. Let me tell you guys, data structure ये ऐसा मॉड्यूल है which is much more practical oriented module, not the concept oriented module. So as far as notes of this module is concerned, I may not be able to give you some good notes or something like that. जितने necessary चीजें, like for example array versus linked list, I have written onto the slides. या फिर ऐसे कुछ चीजें हैं definitely जहाँ पर conceptual चीजें हैं कि trees के definitions क्या है, trees के terms क्या है, so that I can put it on a slides and that I already put it there. But when it comes down to the algorithm, so algorithm के notes नहीं होते. Algorithm होता है, और the person
who do the paperwork more and more times and try to build his own code, he usually get comfort into the algorithm. That's it. Nothing much I can do. There are some conceptual topics also there कि like problem solving technique, greedy approach किसको कहते हैं, dynamic approach किसको कहते हैं. उसमें से कुछ जो चीजें प्रैक्टिकल के लिए जरूरत है, that I have already put it on my slides. और कुछ चीजें ऐसी होगी जो प्रैक्टिकल के लिए जरूरत नहीं होगी, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज होना चाहिए, या कोई एग्जाम में कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है तो होना चाहिए. तो ऐसे कुछ नोट्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं. आई बी एबल टू शेयर विथ यू सम टाइम लेटर, विच इज लाइक अ मोर ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट. सो सम ऑफ द वेबसाइट्स हम लोगों ने यहाँ से वहां से उठा दिया. Yes, whatever you are saying is correct. The confidence entirely depends on a practice. So people who do paperwork and people who write their own code, they are very comfortable with data structure, and the other ones they are very difficult, right? और कुछ है? ज्ञानेश्वर का कुछ कहना है, we learn linked list with interface, and in data structure also, if interviewer asks to write linked list, which one to prefer? Which one to prefer? See, पहली चीज तो when you go to the data structure interview, no one asks you write a linked list. This is never a question. The typical questions that I have always seen that कि write so and so function of a linked list, or assume that data is something like this and then you try to implement this. अगर आप लोग वो असाइनमेंट सॉल्व करते हो, मैंने असाइनमेंट दिए थे, उसके अंदर ऐसा कुछ तो एक असाइनमेंट है, दो नंबर्स का डिफरेंस निकालो, उसको राइट इट बिफोर दैट, दो नंबर का डिफरेंस निकालो एंड सेव इट बिफोर दैट. ऐसा काइंड ऑफ असाइनमेंट है. सो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लिखने के लिए बोले जाते हैं कि do that kind of del last operation on doubly linked list. So at that time you should be able to write a code. Or sometimes कि given a linked list like this, I want this sort of operations to be done. Please go ahead and write a code for this. तो you need to write a code for that. Write a linked list. ऐसा कोई मतलब नहीं होता. ऐसा कोई मतलब नहीं होता. And when it comes down to the language, डेटा स्ट्रक्चर में यूजुअली लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता. सो इंटरव्यूअर नेवर आस्क यू यू राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल, you can always go ahead and write it. Or if you want, you can take a permission of a interviewer what exactly you are looking for. So should I write it in Java? Should I write it into the C language? Should I write it into the another language that I want? I hope Naneshwar you got the point. I would request if you have any questions, please put it on a public forum so that everyone can understand a question, and then probably I can answer. Otherwise, I need to follow the, the way Mahesh sir teach. So I can definitely, it is possible for me. I can keep your chat open, floating onto my screen where everyone can read it. But it will be always good that if you put your question public, so that when others are, when I'm answering, वो बचे हुए लोग, so the rest 300 people, they are going blank. ये नीलेश सर को क्या हो गया अचानक कुछ भी बकबक किए जा रहे हैं. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. करेक्ट. सो मुझको पहले लोगों को क्वेश्चन बताना पड़ता है कि ज्ञानेश्वर ने ये क्वेश्चन पूछा है और फिर उसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ. सो बेटर यू पुट इट ऑन अ पब्लिक फोरम. यू आर मोस्ट वेलकम. I don't worry. If your question is too intelligent that I could not answer, I will definitely say that I will search it later and tell you. If your question is very stupid, that is also fine. We are not even anyway extraordinary. We are the average people. So average people can always ask the average questions. So there is absolutely no worry about that. तो नथिंग टू शाय एंड नथिंग टू वरी अबाउट. कोई बात नहीं. हम लोग कहाँ पर थे? सो आई वाज टेलिंग यू, ए बाय द वे, योर असाइनमेंट इज क्लियर टू यू? हेलो, इज असाइनमेंट इज क्लियर टू यू? आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट. कोई बहुत मुश्किल असाइनमेंट नहीं है. प्लीज गो अहेड एंड डू इट बाय योरसेल्फ. बाद में ये मत बोलना सर ये नीचे वाले फंक्शन चल नहीं रहे. नीचे वाले फंक्शन चल नहीं रहे और कुछ कुछ स्पेशल केसेस में वो नहीं चलेंगे, ये मेरे को अच्छे से पता है. एंड दैट इज द रीजन इट इज गिवन एज असाइनमेंट. दैट इज द रीजन इट इज गिवन एज असाइनमेंट. और वो असाइनमेंट कैसे कंसिडर करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक दो जगह पे कंसिडर करके बताया है कि हाउ यू नीड टू कंसिडर दिस, हाउ यू नीड टू कंसिडर दिस. सो यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम एंड you need to come up with the solution. Chalo, let us continue further. And now the next one we want to talk about is kind of a singly circular linked list. So what basically the singly circular linked list is? Singly circular linked list is basically the singly linked list. What is singly linked list? Each node contains pointer, single pointer. Each node contains single pointer to the next node. So it is basically the singly linked list. But then sir, why it is called a circular? It is called a circular because
the last node, because the last node now not containing null, but the last node all the way containing the address of the first node. Oh, the last node containing the address of the first node, you say that now it is a singly circular linked list. Okay, that makes sense. So I understood what is singly circular linked list. तो सर अब क्या करना है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का? आई एम गोइंग अहेड. अब हमें क्या करना है? वी वांट टू डू द ऑपरेशन इन सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट एज वेल. तो सर प्रोग्रामिंग में कोई फर्क पड़ेगा? प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ओनली थिंग इज दैट अर्लियर लिंक लिस्ट यू यूज टू स्टॉप ऑन नल. अर्लियर लिंक लिस्ट यू यूज टू स्टॉप ऑन नल, कि नल आ गया अभी रुक जाओ. अब अच्छी बात ये है इस लिंक लिस्ट में नल ही नहीं है, और अगर इस लिंक लिस्ट में नल ही नहीं है, नाउ यू नीड टू ट्रैवर्स ऑल द वे. सो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू स्टॉप, और व्हाट ऑल ट्रिक्स दैट यू नीड टू प्ले टू वर्क ऑन दिस, राइट? सो लेट जस्ट गो अहेड. सो नहीं, right now I'm not worrying about, Kishore is saying that tail is equal to head. Not tail is equal to head, the last node's next is equal to head. It is not tail is equal to head. You can say that it is like tail's next is pointing to the head. I hope that is okay. चलो, I'm just going ahead. I'm just going ahead. हमें क्या बता रहा था आपको? हम्म तो सबसे पहला क्वेश्चन, how do I display this linked list? How do I display this linked list? And you will find that the most difficult part in this whole linked list is actually the display. So why display is difficult, you will automatically understand. Let's see. You recall your earlier code. Earlier code you have written in a very simple kind of manner, simply saying that trav is equal to head, while trav is not equal to null. You simply say that print trav dot data, your printed data, and then you simply say trav is equal to trav's next. Is it so? Yes, absolutely no issues. Now the question is that यहाँ पर यहाँ पर null तो होता ही नहीं है. अगर आपने यही कोड वापस से लिखा, then this will go in an infinite loop, isn't it? Yes, it will go in an infinite loop. So what I need to do? Abdullah sir, it is very easy. All we can do is that we can replace null by head. And please understand that every time just doing replacement doesn't solve your problem. So why it doesn't solve your problem? You try to do the paperwork. Try to do the paperwork, you will realize that. So you take a pointer trav. The trav is a pointer that is pointing to the head. Yes, it is pointing to the head. So my first line of code is done. In the first line, I simply say that trav is equal to head. And now what I'm saying, I'm simply saying that trav dot next is not equal to head. Trav dot next is not equal to head. A condition failed over there itself. And since condition failed over there itself, you just directly came out of the loop. Not even a single node it is able to display. So I was just trying to tell you that now this is a typical problem that you face it with this linked list. तो ऐसे मत समझना सर पहले जहां जहां पर नल था अब हम लोग नल निकालेंगे और हेड डाल देंगे and all our problems will be automatically resolved. No, it won't. It won't. Now you need to use some logic. You need to use some logic, some specialized logic. And then what specialized logic that I can use is a very common technique that people follow is, let us go for a do while loop. Instead of this, you go for kind of a do while loop. So if you follow a kind of a do while loop, so will it work? Again, do the paperwork and then come up with the result. Will it work or will it not work? वापस से एक बार से कंडीशन क्या लगानी चाहिए? ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड लगानी चाहिए, ट्रैव इज नॉट इक्वल टू हेड लगानी चाहिए. मैं फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम वेस्ट किया है, आज मैं वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. प्लीज डू नॉट बाय हेड द कंडीशंस. I request you once again, please do not by head the conditions. Better do the paperwork and come up with the result. तो आप बोले सर आप बाहर नहीं करते हो क्या?
मैं कभी बाय हार्ट नहीं करता हूँ। अगर आपने मेरे को कभी ऐसे बीच में से आके अचानक से पूछा, "सर उसकी कंडीशन क्या थी?" मैं कहूँगा, "भई मेरे को याद नहीं है। यू गिव मी 2 मिनट्स, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और फिर तुझको बताता हूँ कि कंडीशन क्या होना चाहिए।" दिस इज़ वेरी सिंपल वन। सो लोग कंडीशन प्रॉब्लम कैसे हो जाता है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ तो गेस कर लेते हो। गेस करते हो मतलब गेस भी नहीं, एक्चुअली मटका मारते हो। तो आप लोग कुछ तो मटका मारते हो और फिर बाद में मुझको आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि भई आप जो मटका मारा है आपने, आपका मटका सही नहीं लगा है। फिर लोगों को बहुत दुःख होता है। करेक्ट नो? सो फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं और नए साल के स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, इज़न्ट इट? सो पीपल से दैट सर आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस। मटका मारोगे तो कॉन्फिडेंस लूज़ करने के चांसेस वैसे भी बहुत रहेंगे। सो मटका मत मारो, डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशन दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो शुरू करते हैं। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। ट्रैव इज इक्वल टू हेड। ट्रैव इज इक्वल टू हेड। यस, ट्रैव इज इक्वल टू हेड। printf trav dot data. printf trav dot data, what it will print is trav का data है 11, 11 is printed. Okay, that is good, 11 is printed. Then what is next line? Next line is saying that trav is equal to trav's next. trav is equal to trav's next, अभी आपको अच्छे से पता है, कलम ने इसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया है. trav's next is 200. I go to the 200. I go to the trav 200. I check the condition. Oh, trav is not equal to head. अभी तो मैंने ये condition लिखा है. There are quite good chances that this condition may be wrong. Let it be. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. So I have written some condition and obviously I want to repeat the loop once again. I want to repeat the loop once again. So let us print it once again. For trav.data. Now trav.data, I printed 22. I printed 22. Again I am saying that trav is equal to trav's next. Trav is equal to trav's next. ये इटरेशन रन करना है क्या? ये मैंने 2 इटरेशन ऑलरेडी किए इस लूप के, थर्ड इटरेशन शुड गो। यस, अभी तक हमारा सारा डेटा प्रिंट नहीं हुआ है, अभी भी 33 पेंडिंग है, अभी भी 33 पेंडिंग है। प्लीज गो अहेड एंड देन यू रन इट वंस अगेन। अगेन यू से printf traveler data, what you printed was 33. Okay, that is good. And now you say trav is equal to trav's next. And what is trav's next? A trav's next is 100, so again you are pointing at the 100. Now should you want to continue? Should you want to continue? No, not really. I want to stop. So when I want to stop? So when exactly I want to stop? I want to stop when trav becomes head, right? And that is the reason the condition was written while trav is not equal to head. While trav is not equal to head, that is something in front of you. Let us just go ahead. Let us just go ahead, do the necessary modifications into the code, and then come back and think of the special cases as well, if any. New Java project and singly circular list. Okay, we got a singly circular list. It is there. Oh, looks good. And to create a package, new package, Sunbeam. It is done. I'll write a new class over there. New singly circular main. Singly circular main. Singly circular list main class is written. That is also good. I do not want to waste my time in writing that switch case and everything once again. So what I'll do is that I will copy paste the existing, at least main function तो मैं copy paste करता हूँ, ऊपर का कोड मैं वापस से लिखूंगा, don't worry. But taking input and all that, it is very boring stuff. Done. So this is ready. And then I need to go ahead, I need to create class singly circular list. Okay, class singly circular list. The object of class singly circular list is to be created. Object of class singly circular list is to be created. Oh, that is in front of you. And then you go ahead, you start implementing all these functions one after another. अभी तक तो मैंने कुछ भी implement नहीं किए, so they are all, I'll comment it and then I'll start implementing all of them one by one after another. Give me a minute, let me just comment all of them. आप लोगों ने कोड शेयरिंग ओपन करके रखा होगा, नहीं किया होगा प्लीज डू दैट, क्योंकि एक पार्ट हम लोग आगे आगे करते जाएंगे. You continue further. So very first thing what you need is that node class to be created. That is good. After that, then we need the list class fields to be written. Okay, that is good. And then list class methods to be written. Chalo, node class, as we have done yesterday,
static class node, static class node, and then again you need to write it node class fields, okay, and then inside that node class methods. Fields is pretty simple, private integer data, प्राइवेट। अब बोलो सर सिर्फ इंटीजर की लिंक लिस्ट बनती है क्या? मैंने कल ही बताया आपको जिस टाइप की चाहिए उस टाइप की लिंक लिस्ट बनाओ। वैसे अगर आप लोगों ने आपका असाइनमेंट ठीक से नोट किया है, एक असाइनमेंट में एक जगह पे आपको ऑब्जेक्ट का लिंक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है, which is kind of a generic linked list actually, correct? So and to be frank, it is very easy to make a object linked list, क्योंकि अगर हम लोग कभी C++ में वगैरह बनाते हैं तो void pointer की linked list बनाना is very complicated job, but making a linked list of an object is very simple job. Hardly few places int is to be replaced by object and it works. तो I leave it for you, आप लोग कर सकते हो अगर करने की कोशिश की तो I am leaving it for you. चलो let us go ahead. Constructor I want to write it so that I can do the initialization. Oh, data is equal to 0. All right. Next is equal to null. One is done. You continue further. I want to write the parameters constructor as well. Oh, yes, we have like a parameters constructor. Yes, you find that this is a parameters constructor, and inside parameters constructor, I have done the necessary initialization. I'm taking, let's say, val, and ये मेरे को नहीं चाहिए. Anyway, so things are going well. This is same node class what we have written earlier. Now come back to the data members. Coming to the data members, what I need: private node, address of the first node. It is just head. This is done. Nothing extra I want to do it. And can you quickly tell me what should I do in a constructor? What should I do in a constructor? Constructor, you say that you want to make the head node is equal to null. Again, तो सर circular linked list में tail pointer नहीं लेते. Choice is yours. If you want to take a tail pointer, you can take it. It is up to you. I do not really bother about it. वो आपकी मर्जी है, लेना है नहीं लेना है, और अगर लेना है तो you need to consider that extra job. जिसको इंटरेस्ट होगा वो लोग करके देख सकते हैं, मुझको नहीं लेना है. I want to keep it simple. Okay, I'm going one more step ahead. Going one more step ahead, क्या करना है मुझको? Yes, I need to write a function, a display function. And what I said, display function के लिए हमें थोड़ा सा tricky काम करना पड़ेगा. We need to start with the head. We want to print each node. We need to print each node data. So travel.data, and then I need to go to the next node. But ये मुझको repeatedly करना है और यहाँ पर null नहीं आता है. तो we said that do while loop is most suitable over here, while trav is not equal to head, and this should give me the result. Okay, earlier I'll just put a message system.out.println. I can say that, let's say, list to be printed. Okay, that's it. और कुछ करने पड़ेगा? Not really. Just think of a special case. What could be the special case? Think of a special case whether you need any changes to be done or not. So I'm talking about the special case where my linked list is empty linked list. If my linked list is empty linked list, then what I can do? What I need to do? Will this code work? If linked list is empty linked list, will this code work? Will this code work? No, it will not work. Why it will not work? Because आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग trav को यहाँ पर null कर रहे हो, trav को null कर रहे हो, and simply saying printf trav.data. Printf trav.data will give you null pointer exception. Okay, तो सर इसका मतलब है अगर null होगा तो मुझको immediately return होना है. Absolutely, null होगा तो आपको immediately return होना है. So I'm talking about a special case. I'm documenting it over here. If list is empty, what is that? Return. Do not do anything special. I don't want to even throw the exception. If you want, yes, you can throw the exception as well. अब मैंने लास्ट वाला जो डिस्प्ले फंक्शन लिखा था उसमें मैंने एक्सेप्शन नहीं थ्रो किया था. जस्ट टू बी कंसिस्टेंट मैं यहाँ पर भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट रिटर्निंग साइलेंटली, राइट? तो आई एम जस्ट गोइंग बैक एंड चेकिंग इट ओवर हियर. Special case, if head is equal to null, simply say return, nothing much to be done. Nothing much to be done. That's it. So special case, let me write it over here.
The special case, list is empty, then nothing to do, then simply return. General case, what is general case? Go ahead and print all nodes in list. Print all nodes in list, starting from the head node till the last node. Will it work? Yes, absolutely. One more small, I can say that variation or probably readability I can talk about. One more small readability I can talk about. ये लास्ट इसमें भी किया जा सकता था, but just for sake of नया देखते हैं. We can always think of writing a separate function. We can always think of writing a separate function to check whether my list is empty or not. Whether my list is empty or not. And what all code I need to write it into that? I need to simply write a code over here. Head is equal to null. So if head is equal to null, condition is true, it will return true. If head is equal to null, it's false. If it is false, means list is not empty, it will return false. So sir, if I write such a function, what is the advantage? The advantage is that instead of directly writing a code over here, you can always write a code is empty. See how good it looks. Now you find that this code is more readable than the earlier head is equal to null. अगेन सर ये लिखना चाहिए क्या? इट इज अप टू यू. मैं ये नहीं कहूँगा कि लिखना कंपलसरी है, बट दिस इज मेकिंग इट मोर रीडेबल. इफ इज एम्प्टी देन रिटर्न, otherwise continue on to this. Is this clear? Okay, good. तो should we write this? हम लोग इसको रखें या निकाल दें? If you are getting confused, I can remove it. This is not a problem. Should I keep it? It's okay. Okay, that is good. So this is just to make it more readable and like a good practice. आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे, जो आपका जावा का कलेक्शन है, जावा के कलेक्शन में एक अलग से empty का मेथड है which is returning a boolean value to see whether the collection is empty or not empty. So ऐसे कुछ छोटे छोटे हेल्पर मेथड्स हम लोग लिख सकते हैं. कोई बहुत बड़ा कोड है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, but that makes your code bit more readable. Anyway, अब मैं आगे जा रहा हूँ. That is good. And now I'm thinking of the next function. What is the next function that I need to think of? Okay, public void add last function. And I want to add a value at the end of the list. So chalo, let us draw the diagram and let us see how we can do that. If we will follow the similar mechanism all the time, you already know that. So I'm just going ahead and with the hope that you people have done now enough of practice. I need not to draw a very that numbers and everywhere all the time. So head is equal to 10. This is pointed to 20. This pointed to let's say 30. This pointed to let's say 40. And this 40 it is pointing at the beginning. So to the head. And this way my linked list is there. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? If we are trying a function, add last function. So be clear with that. So what all steps I need to do it? What all steps I need to do it? Obviously my very first step, बोलो फटाफट से. पहला स्टेप तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा. To want to add a node at the end of the list, what is the very first step? Yes, very first step is that पहले node तो बना लो, उसके बाद में आगे वाला सोचना. Absolutely good. So it is new node and I'm saying 50. And you know that by default हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्टर में इसका नेक्स्ट नल किया है, भूलना मत. इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने इसका नेक्स्ट नल किया हुआ है, इसको भूलना मत. सो इट इज केप्ट एज नल. नाउ लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी विच ऑल स्टेप्स दैट आई नीड टू फॉलो. अगर आपको ये डिलीट, अगर आपको ये नोड एट द एंड ऐड करना है तो डायग्रामेटिकली क्या क्या चेंजेस होने एक्सपेक्टेड है. पहले चेंजेस वापस से, मेथोडोलॉजी स्टिल रिमेन सेम. पहली चीज तो आपको शायद लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए. आई एम वेरी श्योर यू वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. ओके, दैट इज गुड. उसके बाद में व्हाट इज सेकंड थिंग दैट यू लुक फॉर? ये जो नया वाला नोड है, नए वाले नोड के नेक्स्ट में, ये नए वाले नोड के नेक्स्ट में यू आर लुकिंग फॉर हेड. ओके, दैट इज आल्सो गुड. एंड व्हाट इज थर्ड थिंग? नया वाला नोड अभी लास्ट नोड होगा ना, ये नया वाला नोड ऑलरेडी लास्ट नोड होगा, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में हेड आना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर डन. और एक कुछ बचा हुआ है, टेक अ लुक एट द डायग्राम. जो आपका लास्ट नोड है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में यू शुड बी हैविंग अ न्यू नोड.
Oh, so logic goes something like this. A logic goes something like this. First, create new node and initialize it. That is good. Second step would be traverse till last node, a traverse till last node, correct? So that using a trav pointer, you can reach to the last node. Once you reach to the last node, what next thing that you need to do? I always prefer a rule, make before break. मेक बिफोर ब्रेक मतलब जो नए नोड्स है उसकी लिंक हम लोग पहले सेट करेंगे और जो एग्जिस्टिंग लिंक है उसको हम लोग बाद में ब्रेक करेंगे. So I guess that is always a good idea. So with that good idea, continue further. All I need to do is that, all I need to do is that the new nodes, what is that? Make new nodes next is equal to head because ये जो आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड should always point at the beginning. एंड द लास्ट स्टेप वुड बी जो अभी आपको लास्ट नोड मिला है ट्रैव, जो अभी आपको लास्ट नोड मिला है ट्रैव, उसके नेक्स्ट में आपका न्यू नोड जाना चाहिए, उसके नेक्स्ट में आपका न्यू नोड जाना चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली ओके. सो दीज आर 1 2 3 4 steps to be followed. And if these 4 steps are to be followed, why not you go ahead, write a code, and then we will again come back to the diagram and we will again do it on a diagram. Correct? तो पहले जाके कोड लिखते हैं. What are steps? Just now we say that create new node and initialize it. Oh yes, this is my first step. What is second step? Traverse till last node. Last node. Don't forget that. Don't forget that last node is one. In this case, कौन से नोड को हम लोग लास्ट नोड कहते हैं? इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट कौन से नोड को हम लोग लास्ट नोड कहते हैं? इन अ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट वो होता है, लास्ट नोड वो होता है जिसके नेक्स्ट में हेड होता है, जिसके नेक्स्ट में हेड होता है. सो यहाँ पर हम लोग नल को चेक नहीं कर सकते. डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, इसको याद रखना. सो ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड दैट इज द नोड whose next contains contains head in the sense address of first node. Then what you need to do is that new nodes next should point to the head, that is the first node, and then the last nodes मतलब a last node मतलब कौन आपका travs next to the new node. That is what all we need to do it. Let us just go ahead and do it one by one. So how do you create a new node? That is very simple job. Now we are expert of that. So new node and we pass the val there. First job is done. Second, traverse till last node and traverse till last node. How do I traverse till last node? So trav is equal to head. That is good. While trav dot next is not equal to head, not equal to head, trav is equal to trav dot next. That is absolutely fine. Next, the new nodes dot next is equal to head, क्योंकि अभी जो न्यू नोड है वो सबसे एंड में जाने वाला है, और अगर वो सबसे एंड में जाने वाला है तो उसके नेक्स्ट में वापस से हेड आने वाला है. दैट इज गुड. लास्ट, द लास्ट नोड्स नेक्स्ट टू न्यू नोड, the last nodes next to new node. So simply you say that जो अपने ट्रैवर्स करते करते क्लास में गए थे, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट इसको बाय हार्ट मत करो. अब वापस से ये मत कहना सर आपने डिस्प्ले करते वक्त डू वाइल लूप लगाया था, सर यहाँ पर वाइल लूप क्यों लगाया? आई सेड दैट यहाँ पर डू वाइल वाज नेसेसरी. अगर डू वाइल यूज नहीं करते तो क्या होता है, शायद मैंने आपको करके दिखाया था, शायद मैंने आपको करके दिखाया था. यहाँ पर इज डू वाइल इज रियली नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो. डू द पेपर वर्क एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशन. मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप ऐसे मत करो सर, एक बार यहाँ पर डू वाइल लूप लगा दिया तो रट्टा मत मारो कि सर सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है तो हमेशा डू वाइल लगाना होता है, ऐसे रट्टा मत मारो. ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना है ना सबसे मुश्किल काम होता है. सो पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज कि वो क्या याद कर सकते हैं, और देन मैं बता रहा हूं कि आप लोग बाहर मत करो. यू जस्ट गो अहेड, यू डू द पेपर वर्क, एंड देन अगेन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि डोंट यूज डू वाइल. आई एम सेइंग दैट यू डू द पेपर वर्क. इफ योर पेपर वर्क सेज दैट नहीं नहीं वाइल से काम नहीं हो रहा है, देन गो फॉर डू वाइल. एब्सोल्युटली फाइन, नो वन इज स्टॉपिंग यू. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शायद
मुझको शायद लेक्चर के पहले भी बतानी चाहिए थी ऑन अ वेरी फर्स्ट डे। ये मेरा अपना ओपिनियन है और ये आज का ओपिनियन नहीं है। प्रोबब्ली सिंस ईयर 2002, 2001, 2002 जब मैंने पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब से लेके आज तक, सो पिछले 18 सालों में मेरा ये ओपिनियन कभी चेंज नहीं हुआ है। आई स्टार्टेड टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर बाय समवेयर ईयर 2005 नियर बाय। सो 2005 में मैंने पहली बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अभी 2020 है, सो 10-15 साल गुजर गए। 15 सालों में मेरा ये ओपिनियन कभी नहीं बदला। तो ओपिनियन इज वेरी सिंपल। मेरे को ये हमेशा लगता है दैट जो लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, जो लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, वो सारे उल्लू के पट्टे होते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं आप पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाने वाले की बात कर रहा हूं। आई ऑलवेज बिलीव दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट। सो एनीवन हु इज ट्राइंग टू टीच इट, आई गेस दैट ये बंदा खुद पागल है। तो सर आप पढ़ा रहे हो, हाँ मेरे को पता है पढ़ा रहा हूँ, क्या है क्या कहते हैं, कस्टमर डिमांड, सो यू हैव टू सप्लाई, बाकी कुछ नहीं है, बट इट डजंट मेक इट करेक्ट। तो सर व्हाट देन, व्हाई, व्हाट एग्जैक्टली यू आर टीचिंग? I always believe that data structure is not a subject to teach. I always believe that data structure is subject to learn. I repeat, it is not a subject to teach, it is subject to learn. And how to learn? How to learn? You draw the diagram, you come up with your own code, let it be wrong code, right code. You type your own code in any language, you test it. If it is working correct, then you are correct. If it is not working correct, go back to the paper, again do the paperwork, find out the mistake, rectify the mistake, again come up with the modified solution, try that. If it is working, then you are correct. If it is not, again go back to the paper. I'm saying that that is the best way of learning data structure. डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टॉट, डेटा स्ट्रक्चर कैन बी लर्नड। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हो? टू बी फ्रैंक, आप क्या पढ़ रहे हो मुझको पता नहीं, लेकिन मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाया जाता है, पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सो हाउ टू लर्न, आई एम नॉट रियली टीचिंग यू द डेटा स्ट्रक्चर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू मेथड ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर। सो पीपल हु फॉलो दिस मेथड, आई एम वेरी श्योर दे विल बी एबल टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर। सो एनीवन सेइंग दैट हमको डेटा स्ट्रक्चर नीलेश सर ने पढ़ाया, सॉरी नॉट एट ऑल, मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता ही नहीं हूं। आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि दिस इज अ मेथड, you take this method, you follow this particular method, you follow the method, you will be comfortable in data structure. You said that नहीं सर हम लोग सिर्फ सुनेंगे and then we will know data structure, ऐसा कभी नहीं होता है। data structure is not a theory, is not a knowledge कि हमने पढ़ा और हमें knowledge याद हो गया। data structure is something to be tried by yourself, and unless and until you tried by yourself, you can never say कि अब मेरे को data structure आता है and I'm very confident. प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज यहाँ के फॉर्मूले वहां पर मत अप्लाई करो। यू कम अप विथ योर लॉजिक, लेट द लॉजिक बी रॉन्ग, लेट द लॉजिक बी रॉन्ग, ट्राई योर लॉजिक ऑन पेपर, इज इट गोइंग करेक्ट? एंड इफ यू फील बिलीव दैट नहीं से पेपर के ऊपर सही जा रहा है, गो अहेड एंड कोड इट। मैं फिर से बता रहा हूं, तो सर दिस मेथड विल टेक टाइम, आई नो दैट दिस मेथड विल टेक टाइम, बट इट इज रिक्वायर्ड वंस इन अ लाइफ। अगर आपको आईटी में करियर करना है, जिंदगी में एक आध बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना चाहिए और ठीक से ढंग से पढ़ना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। चलो आई एम जस्ट गोइंग बैक, आई एम जस्ट गोइंग बैक एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर। Again, don't take it personally when someone is suggesting me, I'm trying to tell them, but it is not only for that like one person who has suggested me, it is for probably everyone, it is for everyone. So you align your thought process, please understand that. चलो ट्राई करके देखते हैं। सर आपने ये जो कोड लिखा है, इज इट वर्किंग वेल? ओ व्हाट इज द कोड दैट यू रिटर्न? सो न्यू नोड इज इक्वल टू दिस, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके लेट्स फाइंड ए न्यू नोड। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड ओवर हियर। चलो न्यू नोड क्रिएट कर लिया, ए न्यू नोड इनिशियलाइज कर लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज सेकंड स्टेप? यू टेक अ ट्रैव and you try to go to the last node. So you take a trav pointer, this is a trav pointer, trav is equal to head, a check इस head का a इसका trav का next a, is it ahead? Take a look at the diagram, इसका जो next है is it ahead or not really? Go ahead, trav is equal to trav's next, इसका जो next है is it ahead or not? Again trav is equal to trav's next, इसका जो next है is it ahead or not? Again you continue,
ट्रैव इज इक्वल ट्रैव नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट है, इज इट अ हेड? यस, इसका नेक्स्ट, yes, it is pointing to the head, and since it is pointing to the head, I can say that okay, this is the last node. So trav's next, तो जो कोड अभी हमने लिखा, trav is equal to head, trav's next is not equal to head, and trav is equal to trav's next. This is absolutely correct code to go to the last node. चलो I reach to the last node. What is my next step? New node's next is equal to head. Oh, new node's next, ये आपका हेड का है, हेड 10 के ऊपर है, सो न्यू नोड का नेक्स्ट आप लोग कह रहे हो, in new node's next you are saying it should point to the head, it should point to the head, so all the way it is pointing to the head. Is it correct? Yes, last node के next को head पे point करना चाहिए. I understand, I have made a new link. And what is last thing? Last thing I want to say that trav's next is equal to new node. A trav, मेरा trav already यहाँ पर आ चुका है, मेरा trav already यहाँ पर आ चुका है, my trav is already till the last node, till the last node. अब मुझको क्या करना है, इसके नेक्स्ट के अंदर नए नोड का एड्रेस डालना है, तब जाके मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. ट्रैव के नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तब जाके मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. दैट्स इट, दिस इज व्हाट एट लास्ट इज. Now you ask the question, so will it work for every different scenario? Oh, will it work for every different scenario? Let me check it. So you have got, let's say trav, sorry, let's say you have got like a head, and if it is a head, sorry, ये आपका नहीं है, ये स्प्रिंग बूट का है, मैं कहाँ पर था. So let's this is head, and if your linked list is empty, now tell me, do you believe that this code will work? कोड आपके सामने है, head is equal to null, will this code work? Not at all. You'll find that if head is equal to null, at this line it is going to throw me the exception. At this line it is going to throw me the exception. So again, it is a special case. If list is empty, draw the diagram and ask question to yourself, if list is empty and you are creating a new node, at some address, my question is that what you should be doing. ये बोलो फटाफट, as per this diagram इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए पहले वो बताओ, कोड तो बाद में लिख लेंगे. If my list is empty and you are trying to add a new node, इसके साथ क्या होना चाहिए, what we should do over here. I'm talking about a special case. List empty, then the node the node should be first node, the node should be first node. तो it is very easy. तो सर एक काम करेंगे, head is equal to 100. Just take a look at the diagram and tell me, is it sufficient? Take a look at the diagram. Whatever you are saying is not wrong. Absolutely. Head is equal to new node. Is it good? Yes, it is good. But it is sufficient? Not really. ये लिंक लिस्ट बन गया, लेकिन अभी भी ये सर्कुलर नहीं बना है. सर्कुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर बनाने के लिए आई नीड वन मोर एक्स्ट्रा लाइन विच विल इंश्योर दैट इस नोड का लास्ट नेक्स्ट वापस इसको पॉइंट करेगा. So you can always write another line of code saying that new node's next is equal to head. To be frank, you can also write head dot next is equal to head. Yeah, ultimately head and new node both are pointing to the same. Please understand that. ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है. So you write new node's next is equal to head, or you write head dot next is equal to head, or you write new node next dot new node is equal to new node. All are one and the same. उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. This should still go well. तो चलो, if I understand this, let me just go ahead and consider the special case. So special case 1, if list is empty, new node is the first node, and make it circular. Don't forget to make it circular, क्योंकि by default वो circular नहीं होने वाला है, ये आपको पता है. If head is equal to null, or if is empty, I guess this is better. If it is empty, what is to be done, head is equal to new node, that is not issue, but don't forget to make it circular. So new node dot next is equal to head. All right, else
else, which is a general case, add node at the end. At the end, that is pretty simple job. You go ahead, you add it at the end, and that's it. Nothing else to be done. Over. So will it work? Oh, करके देखो अभी. I believe हो तो चुका है. But still, we can go ahead. We can check if it is working. Let's go ahead. Oh, संग ये पिछला कोड रन हुआ है अपना. Not this one. Let me run the current one. Run as Java application. Okay, that is good. And add last 3. Let me add 10. 3. Let me add 20. 3. Let me add 30. 3. Let me add 40. 10, 20, 30, 40. Add last, add last, add last, add last. And then you say display. And yes, it is printing it well. 10, 20, 30, 40. Nothing else is to be done. Is this comfortable? I hope you can copy paste and run it. I'll wait for a minute for you. Code is available on code sharing. Please take it from there and continue. I'm waiting for you, and at the same time, you have any questions, please do ask. वैसे कल मैंने बताया था कि मैं 2 घंटे में बचे हुए 3 लिंक लिस्ट खत्म करूंगा. आई एम नॉट रियली गोइंग विद दैट स्पीड, and anyone who is finding that it is going fast, slow, whatever, please let me know in time. Finding it going fast, let me know. If you find it going slow, let me know. We can definitely, change in time. Chalo, good. So right now we are able to write 2 functions, and not only 2 functions, we are able to even run that add last function and then display function. So we are able to add the node at the end. We are able to display that particular nodes. Things are going well. एक जगह पे हमने do while use किया है because वहां पर वो ज्यादा suitable था. यहाँ पर हमने normal use किया है. That is also good. अगर आपको add last समझ में आ गया, अगर आपको add last समझ में आ गया, trust me, add first is very interesting. Add first is really very interesting. So is it very interesting? What is the meaning of it? I'll just go ahead and I'll try to do it once again. I'm just going back, and please pay attention. Atlas का कोड आपके सामने रखना. Atlas का कोड आपके सामने रखना. और मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ add first के बारे में. And let's see add first. Atlas का कोड सामने रखना. उसका क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ. So you start with the linked list. This is my first 10. It pointed 20. Pointed to 13. This pointed to 14. And this is again pointing back to the 10. Oh, is this one linked list is a circular linked list? Yes, absolutely. This linked list is a kind of a circular linked list. अब मुझको एक नोड at the start ऐड करना है. ओके, ये वाला जो नया नोड है 50, I want to add at the beginning, जिसका next अभी null है. What all steps that I need to follow? Obviously, my very first step, you people understand it. What is that? Create new node and initialize it. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. That already we understand. Now डायग्राम जरा चेक करो और मुझको बताओ एग्जैक्टली मुझको क्या करना है. यहाँ पर डायग्राम में पहले बताओ कि डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए. डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, स्टेप के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं. यस डेफिनेटली, एज समवन इज सेइंग दैट कि मुझको ये करना चाहिए डायग्राम में न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड आना चाहिए. यस आई एग्री. और कुछ, और कुछ. यस जो लास्ट नोड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ डायरेक्टली हेड इज इक्वल टू न्यू नोड मत करना. पहले जो लास्ट नोड है, जो भी आपका लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट टू द न्यू नोड. ये लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है
that should point to the new node. That is another thing that I need to take care. And what is extra thing that I need to take care apart from that? Definitely it is add first है. अगर add first है तो head should point to this. अगर add first है then head should point to this. तो just to summarize, मुझको तीन चीजें करनी है. पहली चीज तो मुझको नोड क्रिएट करना है. आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लास्ट नोड के नेक्स्ट में मुझको न्यू नोड ऐड करना है. अगर आपको लास्ट नोड के नेक्स्ट में अगर आपको न्यू नोड ऐड करना है तो कॉमन सेंस है फर्स्ट ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड. Am I correct? First, traverse till last node. So you need to start all the way from the first node, all the way from the first node, and you jump, you go to the last node, reach to the last node. Then what you are saying next? On then third step, I'm saying last node next is equal to new node. Is it so? Yes, last node next is equal to new node, but not only last node next is equal to new node, also new node next is equal to head. A new node's next is equal to head. Yes, I need to take care of that as well. So I talked about this. You see the steps. The first step somewhere you are saying create a node. Okay, that is good. Step number two, you traverse till the last node. I understand. Step number three, somewhere new nodes next. A new nodes next is equal to head. Oh, that is also all right. Step number four, the last nodes next is equal to new node. That also understood. And one more step that was left. One more step that was left is nothing but a head is equal to new node. A head is pointing to the new node. That was step number 5. Can you just compare with the code that you have written just now? अभी आपने जो आइडलास के लिए जो कोड लिखा है क्या आप लोग कंपेयर कर सकते हो? स्टेप्स आपके सामने हैं. जो कोड आपने आइडलास के लिए लिखा है क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो? डू यू सी सम सिमिलरिटी देयर? अरे स्टेप्स मैंने लिखे, कोड भी आपने लिखा है, और आइडलास का कोड अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने लिखा था. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोड. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोड. सी, आई विल टेल यू. Forget about special case. Create new node and init it. A create new node and initialize it. Step number 1. See it carefully. Next, traverse till last node or traverse till last node. You are traversing till last node. That is your case number 2. That is good. Third thing, new node next is equal to head. Oh, new node's next is nothing but the head. Oh, we have already written that. Plus extra. Last node next is equal to new node, or last node next is equal to new node. That also we have written. Oh, what all left is only one thing, is since we are adding a node at the start, since we are adding a node at the start, at the start matlab head pointer must point to that node, isn't it? I hope Pooja that is clear. हम लोग पांचवा स्टेप क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एड फर्स्ट है. एड फर्स्ट मतलब अगर नोड आप लोग एट द स्टार्ट ऐड करने वाले हो then definitely head should point to that particular new node, and that is what only one extra line that we need. The rest entire code is copy and paste. So writing add first is a matter of a minute, not even minute, few seconds. All I'm doing is that changing a name of a function from add last to add first, changing a name from add last to add first. You go ahead and then everything I'm saying that make head to new node. That's it. Just write one more line, head is equal to new node, and that's it. So add first is completed, add first is completed. So code of add last and add first is exactly same with one line extra. With one line extra. Don't worry, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन. अगर हमें नोड एट द बिगिनिंग ऐड करना है, पहले आप लोग डायग्राम चेक करो. अगर आपको नोड एट द बिगिनिंग ऐड करना है, आपको नोड यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है, तो आपको क्या क्या नया चीज करनी चाहिए? सबसे पहले तो नोड क्रिएट करना चाहिए. दैट एब्सोल्युटली फाइन. व्हाट इज सेकंड स्टेप? You need to go till the last node, so you need to traverse till the last node, so you traverse till last node. That is second thing. Okay, that is also done. First thing is done, second thing is done. Third thing, the new nodes next is equal to head. New nodes next is equal to head. आप लोग कह रहे हो ये नोड इवन तो आप लोग एट द स्टार्ट ऐड कर रहे हो,
सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होता है. सो दिस नोड will this node will point to the head. A new node's next is equal to head, and at the same time last node should point to the new first node. Last node should point to new first node. That is also done. And what is the final last thing? The final last thing, all you do that head is equal to new node. Head is equal to new node, so that from there onwards your linked list will begin with head. Your linked list will begin with the head. So अभी आप लोग चेक करो आपकी लिंक लिस्ट सही जा रही है क्या. ये लिंक लिस्ट हम लोग चेक करते हैं. हमारी लिंक लिस्ट शुरू होगी 50 से, बाद में 10 पे जाएगी, बाद में 20 पे जाएगी, बाद में 30, देन 40, एंड देन ऑल द वे घूम के वापस से इसको पॉइंट करेगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स आई नीड टू डू, आई गेस. इज दिस क्लियर? दिस इज प्रीटी सिंपल, नथिंग ग्रेट इज देयर. तो सर काम करता है क्या? हाँ काम करता है क्या, दैट कुडंट बी अ क्वेश्चन. तो काम करता है क्या, करके देखते हैं. और अभी हम लोग एड फर्स्ट कर रहे हैं, एड फर्स्ट कर रहे हैं. सो टू एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग 10, एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग लेट्स से 20, एडिंग अ नोड एट द बिगिनिंग 30. ये पहले मैंने 10 ऐड किया, 10 के पहले मैंने 20 ऐड किया, 20 के पहले मैंने 30 ऐड किया. पहले मैंने 10 ऐड किया, 10 के पहले मैंने 20 ऐड किया, 20 के पहले मैंने 30 ऐड किया. तो फाइनली माय लिंक लिस्ट विल बी, यस जानवी दैट इज करेक्ट, इट विल बी 30 20 10. एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है. एंड ओ ओ कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट. नीचे का कमेंट हम लोग ने नहीं निकाला शायद. हाँ ये कमेंटेड है ना. मैं भी डर गया, ऐसे क्या हो गया. कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड, रन इट वंस अगेन. 2 10 2 20 2 30 10 20 30 display. Oh yes, it is working well. That is working well. Say 0 and done. Why don't you try it? All right. So that is good. The majority of you had done that. Now let us move further and we talk about the next. What is the next? Next part that we want to talk about is add at position. Add at position. And to make an add at position, go ahead. We have got a head pointer. Let's say it's 10, it's 20, it's 30, it's 40, 50. Let's say it is all the way there. And I want to add a new node at the position number 4. If you want to add a new node at the position number 4, डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? एक नया नोड क्रिएट होना चाहिए. डायग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? एक नया नोड क्रिएट होना चाहिए. और अगर आपको फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है तो थर्ड पोजीशन के नेक्स्ट में ही आना चाहिए और इसके नेक्स्ट में ओल्ड फोर्थ पोजीशन आना चाहिए. इज इट व्हाट शुड हैपन? ऑब्वियसली ये लिंक डिस्ट्रॉय होना चाहिए. एडिंग अ नोड एट द फोर्थ पोजीशन, डायग्रामेटिकली क्या आउटकम यही आना चाहिए? यस ये आना चाहिए. और क्या आना चाहिए? नथिंग मच. तो क्वेश्चन इज सर स्टेप्स क्या क्या करने पड़ेंगे? अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट का कोड अवेलेबल है, आई रिपीट, अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट का एडेड पोजीशन का कोड अवेलेबल है, हो सके तो उस कोड को एक बार ओपन कर लो. हो सके तो एक बार उस कोड को ओपन कर लो और एक बार उसको थोड़ा सा चेक कर लो कि सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में एडेड पोजीशन के लिए हमने क्या क्या
किया था. I'm not trying to code. I'm saying that just comments भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा. So what all we need to do? We need to allocate the new node. Good. We need to traverse till position -1. Good. Special cases छोड़ देते हैं. New node के next should point to the travs next. Okay, that is good. And then travs next should point to the new node. Oh, this is what all logic that we need to do. Absolutely. चलो, let us see it and let us go and take a look at कि इस circular में हमें क्या क्या करना पड़ेगा. Let's see. Let's see क्या क्या करना पड़ेगा. I understand very well. अगर आपको नया नोड यहाँ पर ऐड करना है, my very first step will be go ahead and create a new node. Yes, I will create a new node. That will be my very first step. Good. What should be the second step? The second step would be I need to traverse till position -1. Or traverse till position -1, position -1, position -1. Yes. So I have got trav pointer and this traversing till position -1. Traverse till position -1. That would be my second step. Yes, I traverse till position -1. That is second step. What should be the third step? What should be the third step? The third step should be ideally ये जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में ये जो ट्रैव था उसका नेक्स्ट आना चाहिए. ये न्यू नोड के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए. दैट इज करेक्ट गौरव. न्यू नोड के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए. लेकिन 40 कहाँ पर है? अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, ये 40 मेरे ट्रैव के नेक्स्ट में. ये 40 कहाँ पर है? ट्रैव के नेक्स्ट में. सो आई कैन सिंपली से दैट पॉइंटिंग दिस टू दिस, दैट शुड बी प्रोबेबली माय थर्ड स्टेप. Understood? And what is the fourth step? What should be the fourth step? The fourth step is like very easy. All I need to do is that trav के next में इसको point होना चाहिए. आपने नया वाला link बना लिया है तो old वाला link break होना चाहिए. Trav के next में new node आना चाहिए. That is your fourth step. Now just tell me, is it any way different than what we have seen in a single linked list? Is it any way different than what we have seen in a single linked list? Absolutely no. तो सर यहाँ पर क्या कोड करना है? टू बी फ्रैंक यहाँ पर कुछ भी कोड नहीं करना है. जो भी कोड किया है उसको कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. जो भी कोड किया है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है. एंड दैट इज द रीजन. अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या बता रहा था कि कल के लैब में उसका ठीक से प्रैक्टिकल करो, सारा पेपर वर्क करो. एज यू डू मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स you will be more and more comfortable. And if you are comfortable with one linked list, you can be always comfortable with not only linked list but everything else. Now मेरा basic code is done. What about my special cases? Any special cases to be considered? Oh, special cases to be considered. If list is empty, uh, add the node at the start. I understand. If position is less than equal to 1, I want to add the node at the start. Okay, that is all right. In either case, I need to make a call to the add first function. In either case, I need to call the function add first function. So that is good. मुझको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. So even my first special cases is also fine. What about this special case? If you are trying to add a node which is beyond the position, if you are trying to add a node beyond the position, what will happen? Oh, travel.next is equal to null. What will happen? Now there is a problem because यहाँ पर null तो कभी होने ही वाला नहीं है. तो मुझको कैसे पता चलेगा कि you are going beyond the position? ये trav.next is equal to null. ये लास्ट प्रोग्राम में ये क्या चेक कर रहा था? ये लास्ट नोड चेक कर रहा था. तो अभी मैं लास्ट नोड कैसे चेक कर सकता हूँ? With our earlier example, we know it very well. I can simply replace it with the head. बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. So which will automatically understand that my position is going much beyond the length. And if it is going beyond the length, that's it. So और कुछ करना है? और कुछ नहीं करना है. Just go ahead, run a program, and then come up with the result. Let's see, is it working well? Let's see. पिछला कॉपी पेस्ट किया तो कुछ उससे वो भी कॉपी किया, पैकेज भी कॉपी किया था. Let us run it once again and let us check whether the insert at a given position is it working or not. Working or not. Let me first of all say 3, 10, 3, 20, 3, 30, 3, 40. And right now 10, 20, 30, 40, this is my linked list. Oh, I see that. I want to add 50 at position number 4. पहले general case पहले check करते हैं. I want to add 50 at position number 4. So 4, add 40,
एट पोजीशन नंबर 4, मतलब 30 के बाद में और 40 के पहले ये आना चाहिए। ओ यस, अच्छा मैंने 40 ऐड किया, कोई बात नहीं। सो 40 इज एडेड वंस अगेन, ए 40 इज एडेड वंस अगेन। मैंने 50 ऐड करना था, मैंने गलती से 40 ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली द 40 इज एडेड ओवर हेयर। सो लुक्स गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल। बट व्हाट अबाउट अगर मैंने पहले नोड के ऊपर ऐड करने के लिए बोला तो यस आई वांट टू चेक दैट एज वेल। सो आई सिंपली से दैट एडेड पोजीशन, let's say once again, and let's say I'm trying to add element 60 at the position 0, at the position 0, at the position 0, and let me check, is it working? Yes, it is going well there. So what about if you put it at the end? अभी already मेरे पास कितने नोड है? मेरे पास 6 नोड है। If I give the position number 10, will it work? Obviously it will add it at the end. I want to check that as well. 4 new element is let's say 70 and the position number 10, ये 6 नोड में 10 पोजीशन तो वैसे भी नहीं हो सकता। I just want to check, is it adding it at the end? Yes, it is adding at the end. So everywhere I guess the things are going good, things are going good. So I really don't think कि इसके अलग से आपको कुछ करने की जरूरत है, isn't it? All we are doing is only this much. Ekansh, have a look at this, Ekansh. Your basic code is this much. Acha, line number 111. I thought something is going wrong. Okay, in a diagram I should explain it. No problem. I'll explain. Go ahead. That's why I say that I do recommend please ask specific question. It will help us to go in a better way. So I'm just going ahead and going with the diagram. You can keep probably code side by side for you so that you can understand better. ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बियॉन्ड द पोजीशन वाला होगा तो ये कैसे हैंडल होगा, बियॉन्ड द पोजीशन वाला होगा तो ये कैसे हैंडल होगा। हेड, a head is pointing to let's say 10, this pointing to 20, this pointing to 30, all the way this is pointing at the beginning. Okay, that is good. This is my trav pointer, this is my trav pointer, and what you want to do, you want to add some node, you want to add some node beyond the position. Obviously beyond the position मतलब अगर beyond the position आता है तो हमने डिसाइड किया है कि हमको नोड एट द एंड ऐड करना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ नोड, which node to be added? Let's say that my new node is let's say 40, and this is nothing but the new node which is at the moment next is equal to null. So how exactly it is going, ये आपने काउंटर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब let's say that I'm giving the position, I'm giving position is equal to 8। अब मेरी लिंक लिस्ट 3 नोड की है तो पोजीशन नंबर 8 तो हो ही नहीं सकता, इट इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो इनिशियली i is equal to 1 जहां से हमने लूप चालू किया है, टेक अ लुक एट दिस, i is equal to 1 जहां से हमने लूप चालू किया है, i is less than position minus 1, i is less than 7, yes i is less than 7। हमको क्या करना है, i is less than 7, trav is equal to trav's next, a trav is equal to trav's next, a we went ahead, trav is equal to trav's next, and then we continued further. Again you say I plus plus, it become 2, it become 2, and again when it is 2, again you check that 2 is still less than 7, yes 2 is still less than 7, you go ahead, you again want to say trav is equal to trav's next, you again want to say trav is equal to trav's next। however please note that you are already at the last node। अब इसके बाद में ऑलरेडी आप लोग थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हो, ऑलरेडी आप लोग थर्ड पोजीशन पे के ऊपर पहुंच गए हो, आपने यूजर ने बोला है कि पोजीशन नंबर 8, ये पोजीशन नंबर 8 तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में मुझको करना क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है, ये जो नोड है ये मुझको एट द एंड यहीं पर ऐड करना है, और अगर मुझको यहीं पर ऐड करना है तो मुझको मेरा लूप यहीं पर रोकना चाहिए, करेक्ट। सो यू गो बैक, you again say I plus plus, I plus plus, I becomes 3, I becomes 3, and now you check, oh 3 is less than position minus 1, yes 3 is still position minus 1, not a problem, you are checking over here trav dot next is equal to head, or trav dot next, is it equal to head? Oh yes, it equal to head, it only means that this node is a last node, if this node is the last node, there is no point in repeating this loop again and again। repeat करके हम लोग क्या करने वाले हैं, nothing much। so I just simply say break, come out of the loop, come out of the loop, when I come out of the loop I found that the trav is pointing at the last node, and then what you're doing, new nodes next is equal to trav's next, a new nodes next is equal to trav's next, a trav's next is nothing but all the way it is last node,
So it is pointing to the head. This is done. Last thing, travs next is equal to new node, or travs next is equal to new node. So this trav, uska next, it is pointing to the new node. Now it is no more pointing to this. And this is how, when I have given position is equal to much beyond this, at that time it is not giving me the exception, or it is not adding at the wrong position, it is trying to add at the end. So it is doing kind of a add-less operation. I hope, Ekansh, that is clear. What all I'm saying is that I was simply saying that हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या ये लास्ट नोड है, और अगर लास्ट नोड है तो लूप में आगे मत बढ़ो, यहाँ से बाहर आ जाओ, और वो लास्ट नोड के बाद में ये नया वाला नोड ऐड कर दो, लास्ट नोड के बाद में ये नया वाला नोड ऐड कर दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सेप्शन. What was the other option available? Other option was available. You may say that this is the wrong position. You might throw the exception from here, saying that कि ये position गलत है, हम लोग आपके नोड को ऐड नहीं करते. आपकी लिंक लिस्ट है, चॉइस आपका है. Done. Add at position. Is it clear to everyone? Good. And if it is clear to everyone, let us go ahead with the complicated function. Complicated function. Bolo, ruko. Pooja is saying that, so sir, can instead of this, we can call idleness function. Pooja, conceptual answer is yes. Instead of doing this, can we make a call to the idleness function? Absolutely, you can call to the idleness function. But I personally do not prefer it. Why I personally do not prefer it? You just understand that. Already you have traversed the entire loop. Take a look at this. Already you have traversed the entire loop. And after that, if you made a call to the add last, after that, if you make a call to the add last, what will happen? What will happen? You go to the add last function, and again you will do the entire traversing once again. In my opinion, this is somewhere your performance is getting reduced. And that is the reason I didn't like that I can again call it. But can we call it as far as output is concerned? Answer is yes, you can still call it. पूजा का क्वेश्चन ये था, मैंने कहा ना यार क्वेश्चन पब्लिक फोरम पे डालो रे, पब्लिकली डालो. हाँ, पूजा का क्वेश्चन ये था, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, क्या हम लोग यहाँ पर एडलास्ट कॉल कर सकते हैं क्या? और मेरा आंसर है डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज कॉल एडलास्ट ओवर हियर एंड वी कैन ऐड द नोड एट द एंड यूजिंग दैट. लेकिन मेरा कहना ये था कि यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक बार लूप लगाया है, यू ऑलरेडी ट्रेवर्स एट द एंड. नाउ इफ यू मेक अ कॉल टू द एडलास्ट, now if you make a call to the add last, from here you will go into the add last, and inside add last you are again writing a loop to again go to the last node. तो आपका ये लास्ट तक जाने वाला जो लूप है, ये लूप आपका 2 बार रिपीट हो रहा है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रनिंग टाइम बढ़ जाएगा. एंड दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग दैट अगर आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो, अगर आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो, then better you should do it over here itself. As far as efficiency is concerned, as far as output is concerned, you may call idlers, that should still work. Pooja, is that clear? वैसे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आज 31st का पार्टी काफी अच्छा किया. When today lecture started, by 9 o'clock, there were 270 students. So I started lecture with 270 students, and now I see 348. Look like few people are still not wake up from the party. जब वो उठ जाएंगे तो उनको बताना कि अपना भी पार्टी हो गया यहाँ पर करके, लिंक लिस्ट खत्म हो गया. एनीवे, हम लोग आगे जाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन. विच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन? In my opinion, the next function we will say delphus function. So delphus में complication क्या है? करके देखते हैं. Complication है भी या नहीं है? Let's see. So you have got a node, head pointer pointing to this 10, this pointing to 20, pointing to 30, pointing to 40, all the way. This is pointing to head once again. And now I want to delete the node. Can you please tell me diagrammatically, if you want to delete the node, if you want to delete the node 40, what should be done? 14 नहीं 10 delphus चल रहा है. ए delphus में
अगर आपको 10 को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 10 को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, so one thing someone is saying that I should be going with head is equal to heads next. ये ऐसे करना पड़ेगा. But is it sufficient? Yes, absolutely correct. There is something extra also you need. Just saying head is equal to head arrow next is not sufficient. Just saying head is equal to head arrow next is not sufficient. You need to again go ahead. You need to go to the last node. You need to go to the last node, and your last node's next should point to this node. Is it so? Yes. So I need to take care of that as well. हाँ, जब मैं ऐसे करूंगा तब मैं कह सकता हूँ अच्छा ओके नाउ दिस इज गोइंग गुड. तो what all things that I need to do? What all things that I need to do? In a general case, in a general case, I need to first of all traverse till the last node. Okay, traverse till last node. अभी आपको समझ में आ गया लास्ट नोड तक कैसे ट्रैवर्स करना है. Okay, that is good. So I reach to the last node. What should be the second step? What's the second step? अब वो जो ट्रैव का जो नेक्स्ट है पहले उसको मैनेज कर लेते हैं. आई गेस या तो अब आपकी मर्जी है या तो ट्रैव का नेक्स्ट पहले मैनेज कर लो या हेड को मैनेज कर लो. इट इज अप टू यू. लेट्स सेट टेक head to next node in the sense I'm saying the second node. A first node को delete करना है तो you are going to the second node. Okay, that is done. So head is coming over there. So like a first step, second step. Now head is pointing to this. And then what should be the third step? Now whatever is your new head, okay, whatever is the new head, then I'm saying that travs next to this new head. It travels next to new head. That's probably third thing, so that this link is automatically broken. I guess nothing much we need to do it. फिर से एक बार, what all I'm saying, you go ahead. First thing, you need to traverse. You need to. This is where head is. So travel यहाँ से शुरू करो, and you first reach till the last node. So I reached till the last node. I got the last node. Last node आ गया. What is next job to be done? ये जो head अभी यहाँ पर point कर रहा था, let's say that let us make head pointing to the next node. A head is now pointing to the next node. That is okay. And then what is next job to be done? ये जो आपका नया head है, ये जो trav का जो next है, last node का जो next है, it should point to the new head. Point to the new head. Is that all right? अगर आप लोग सर हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट अगर मैं पहले नहीं कर रहा हूं तो पहले नहीं कर रहे हो तो फिर चॉइस इज योर्स. तो पहले आप लोग क्या कर सकते हो ट्रैव नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट एंड देन यू कैन से हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट. तो ऑर्डर आपने कैसे किया है फैज एंड गौरव, ऑर्डर आपने कैसे किया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपने पहले हेड को मूव कर लिया है देन आई कैन सिंपली से ट्रैव नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हेड. कुछ लोग अगर इस ऑर्डर को अगर आपको उल्टा करना है सर इस ऑर्डर को मुझको उल्टा करना है अगर आपको उल्टा करना है तो फिर सो आई हैव नॉट येट मॉडिफाइड द हेड सो आई कैन से दैट ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट एंड देन यू कैन से दैट हेड इज इक्वल टू हेड्स नेक्स्ट. इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसे सोच रहे हो और कैसे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो एंड बोथ आर करेक्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. लेट अस गो अहेड एंड राइट अ कोड. कौन सा बड़ा तीर मारना है? Let us go back, write a code. By the way, this is general case. We need to still think of the special cases. What else first? So again, write it in English first. What is first thing? First thing is traverse till last node using trav. Okay, done. What is next step? Okay, take head to the next. Next in the sense second node. Next node. Okay, that is also done. And then the last node is trav next should be to the head to the new head. I would say new head, updated head. Let us put it in a code. How do you put in a code? Node trav is equal to head. That is good. How do you traverse to the last node? By the time we are comfortable, I guess trav next is not equal to head. Trav is equal to trav dot next. एक कंफ्यूजन शायद कुछ लोगों का कल था, कुछ लोगों का मतलब एक दो लोगों का था. जब हम लोग व्हाइल लूप में एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है.
तो जब मैं while के बाद में curly bracket नहीं लिख रहा हूँ, इस loop के अंदर सिर्फ एक ही statement चल रहा है. Please understand that. Okay, next. उसके बाद में what I'm doing next? I want to take a head to the second node. Head dot next. Oh, that is also done. And then वो जो last node था, उसके next में head आ गया. Over. By the way, is there any special cases for this? Do we have any special cases for this? ये पहले फिर से एक बार बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'll just repeat this part once again and then we'll look for the special cases. I'm going ahead, repeating this once again. So traverse till last node, you take some pointer. Let's say this is a pointer. So you started with trav is equal to head. A trav is equal to head और हमें last node पे जाना है. Last node वो होता है जिसका next वापस से लास्ट नोड वो होता है जिसका नेक्स्ट हेड है. सो इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड. इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड. इसका नेक्स्ट हेड नहीं है, गो अहेड. इसका नेक्स्ट हेड है. सो आई फाउंड दैट दिस इज नथिंग बट माय लास्ट नोड. दिस इज नथिंग बट द ट्रैवर्स. Okay, so I have traverse till the last node. The piece of code that is been written over here, it is something in front of you. Second thing, the take head to the next node. Take head to the next node. So I'm saying that the step number 2, take head to the next node. And again, hardly one line of code. जो आपको ऊपर दिख रहा है, head is equal to head dot next. That is the second step. And step number 3, ये जो आपका last node है, इसका जो next है, it should point to the new head. It should not point to the old one. All I need to do is that trav's next is equal to this new head. So trav's next is this updated head. Nothing else is to be done. That is in front of you. So all we discussed was like kind of a del first operation. But in a general case, the special cases, yes, special cases. Now I'm going ahead. What if my linked list is empty? If my linked list is empty, is there any point in traversing till last node? If list is empty, is there any point in traversing? No. To be frank, in this case, nothing to be done. I guess that if list is empty, क्या करना चाहिए? Last time क्या किया था? I guess we can simply throw the exception saying that linked list is empty. Okay, that is done. But is it the only special case that you have? got? हाँ, yes, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था. And we need to think of it. What if my linked list is having only one node? What if the linked list is having only one node? अब क्या करना चाहिए? So if list has single node, what to do? Just nothing else. We have to simply make head is equal to null. If we have to simply make head is equal to null, so that this node is as good as deleted. So आपको ये delete करना है और इसको null करना है. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. वैसे भी नोड तो ऑलरेडी garbage collect हो ही जाएगा. आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. So that is what all you understand. And if that is what all you understand, I'm just going ahead. Let me write the special cases. So special case number 1. What is special case 1? If list is empty, throw exception. If you have decided to throw the exception, not very difficult job. Go ahead. If is empty, throw new runtime exception. वैसे अच्छी चीज ये है कि डेटा स्ट्रक्चर आपके बैच में यूजिंग जावा है. So as you are like a data structure using Java, it gives you time. To spend more time onto the Java, and more coding that you do with the Java. I'm very sure you'll be a bit more confident as well. List is empty. Chalo, this is done. Okay, but what is special case number 2? Special case number 2. If list has single node, yeah, how do I check? Then make head null. But how do I check whether the list has got a single node? Yes, heads next is pointing to the head itself. You take a look at the diagram.
head is 100 and head's next is also pointing to the 100. So when head's next is pointing to the head, it is there. All I need to do is that just make head is equal to null. Head is equal to null. Else, which was your general case, and what that general case is talking about? That general case is talking about that general case, delete first node, or delete first node. It is in front of you. Is this all right? Will it work? Please go ahead, try it at your end, check whether it is working. Don't worry, it is going to work. It's not a problem. You can just quickly go ahead. I can try to run it once. So 3 at last 10, 3 at last 20, 3 at last 30. So my current linked list is 10, 20, 30. I want to delete the first node. Delete the first node. Yes, 10 is deleted. Yes, 10 is deleted. Delete 20. Let me just check. Yes, 20 is deleted. Again, you continue further, delete first, and you find that even the last 30 is left, even that is deleted, list is empty. You try to delete it once more. Oh, list is empty, exception is thrown. So everything looks well to me. आप लोग check करके देखो whether it is working at your end as well. And we will take a break now. So Delphos हम लोगों ने कर लिया है. Dellas के बारे में आप लोग सोचो कि how you can do that. Well, after the break, we'll talk about the delete at the position, and we will also talk about delete all. Correct? If you have any question, meanwhile, post it. Welcome back. You're there. Okay. Let's get started once again. And what we were talking about was a function like del first. I hope you people have understood it. And now we'll go ahead and talk about next function, delete at the position. Let's just go back. Let us do the paperwork first. And after that, we will think whether what all changes that we need or whatever. So function is, let's say, delete at position. Delete at position. So this is a linked list. Head is pointing to 10, 10 is pointing to 20, 20 is pointing to 30, 30 is pointing to 40, 40 is pointing to 50. बस बहुत हो गया. And we will follow something similar technique for deleting at the position. Which technique to be followed? The something that we have seen earlier. Let's say that we will have a pointer, let's say temp, a trav pointer, and one pointer running behind it. One pointer running behind it is, let's say, trav pointer. Sorry, one trav pointer और पीछे चलने वाला pointer, let's say temp pointer. So what all I need to do? I need to traverse up to the given position. So if at all I want to delete this node, if I want to delete this node, practically क्या होना चाहिए? उसके पीछे का जो node है, उसके next में आगे के node का address आना चाहिए. This is what all I need to do. This is what all I need to do. So what steps that probably I will follow? It is very easy. You continue further. You want to go to the position, but before you go to the position, you say that temp is equal to trav, trav is equal to trav's next, temp is equal to trav, trav is equal to trav's next, temp is equal to trav, trav is equal to trav's next. This ensures that when trav reach to the node at the position, temp is already pointing to a node before that. Temp is already pointing to a node before that. And if it is so what is next to be done? Next, nothing much to be done. Now this is trav, this is temp. So can you please tell me, अब मुझको यहाँ पर क्या करना चाहिए? This is trav, this is temp. तो मुझको यहाँ पर करना क्या चाहिए? Nothing special. All I need to do is that temp's next is equal to trav's next. Temp's next is equal to trav's next.
and automatically the trav pointer, this is a trav node, will be automatically garbage collected later by the JVM. I need not to bother about it. So what all your steps are? Steps are pretty simple. Traverse till the position with a pointer behind, one thing. And second thing, simply say temps next is equal to travs next. Okay, that is good. So let's go ahead. So code फिर से लिखना है. Now I'm not really planning to write the code once again. I can always go back. The code, similar code we had already written. The delete at the position in a singly linked list. Singly linked list में हमने जो code लिखा था, सिंगल इंग्लिश में कोड लिखा था, the same logic we had written. Temp is equal to null and trav is equal to head all the way, and we are just checking over here. I is equal to 1, I is less than position, I plus plus, and etc. Trav is equal to null. वो छोड़ दो. Temp is equal to trav and trav is equal to trav's next. Temp is equal to trav and trav is equal to trav's next. This way we are trying to traverse till the node and temp is running behind, and then simply temps next is equal to travs next. So your general case logic will still remain same. So what about special case logics? The special case logic, अगर आपको पहले position का node delete करना है, you can make a call to the del first directly. Yes, I understand that. If at all the position is wrong position, or if the head is null, you might want to throw the exception. Okay, that is also fine. You might throw the exception. It is up to you. And if at all you are trying to go beyond the position, if at all you are trying to go beyond the position, at that time also you want to throw the exception. But then how do I get to know that you are trying to go beyond the position? Oh, I can just check it over here. If trav.next is equal to head, if trav.next is equal to head, so I understand that we are trying to go beyond the position. So अगर मेरे पास 3 node है and you are saying that delete the fourth node, delete the fourth node, you should be saying that oh you are going out, तो यहाँ पे delete करने का कोई chance ही नहीं है. You can simply throw the exception like invalid position. That is what all efforts that we need to take. So delete at a position, delete at a position is quite similar to what we have seen earlier. सर ये काम करता है क्या? काम करता है क्या? वो काम करा के देखना पड़ेगा. Let's see. I'm going ahead. I'm trying to there's an error. हाँ कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी पेस्ट की वजह से उसका पैकेज भी इंपोर्ट हो जाता है. कोई बात नहीं. I'll try to run it once again. Okay, let me add the node 3 at last. 10, 3, 20, 3, 30, 3, 40, 3, 50. So right now the linked list is 10, 20, 30, 40, 50. I want to delete the node at the fourth position. So 7, and I want to delete the node at the fourth position, means 40 is to be deleted. Can you check? Oh yes, 40 is gone. I want to check. Let's say I want to delete the node at the first position. Is it working well? Let me try that as well. 7, delete the node at the first position, matlab 10 has gone. Oh yes, 10 is also deleted. That is also not a problem. Let us continue further. The another one. Let's say that I want to delete the last node. I want to delete a node at the third position. Is it working well with this? So 7, delete at a position at third node. It is giving me the error saying that it is invalid position. So look like there is something wrong with this. कोई बात नहीं, एक और try करते हैं. If it is beyond the position, if it is beyond the position, वो भी try करके देखते हैं. Let's say already I got 3 nodes and you are saying that position number 10. Yes, obviously position number 10, it is working very well, saying that it is in invalid position. तो look like सिर्फ ये जो last node है, वो जो हमारा जो loop चल रहा है, जो हमारा loop चल रहा है, जहां पर हम लोग invalid position counting कर रहे हैं, I guess we are doing something wrong with that. So that is the only thing we need to rectify. Otherwise rest everything looks good. I guess मैंने इसको change किया था क्या जगह? I believe so. Let's see. फिर से एक बार करेंगे. 10, 20, 30. That's it. Display and delete at the position 7. Delete at the position number 3. Yes, it is deleted. A third node, the last node is deleted. 30 is deleted. Oh, I guess मैंने कुछ तो करते वक्त उसको कट पेस्ट किया था, उसका लोकेशन चेंज किया था. Now I guess everything is all right.
So I just simply say that, sir, this code and earlier code, इसमें क्या difference है? कोई difference नहीं है. सिर्फ यहाँ पर travis equal to null, that was one check was there, और वो check मैंने सिर्फ यहाँ पर change किया है क्योंकि ये circular linked list है. Apart from that, there is no change. Rest entire code is working well as it is. I hope that is all right. Why don't you try it? And meanwhile, there was a question by Ajinkya, and Ajinkya, I guess you today joined late. So if you join late, whatever question that you ask, that was the first question for today's session asked by the Naneshwar. And the question was very simple कि हम लोग ये टेम्पो ट्रैव क्यों ले रहे हैं? हम लोग सीधा ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रैव डॉट नेक्स्ट, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं. लेकिन मैंने कहा ना, मैं जब भी कोड पढ़ाता हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम. सो बहुत सारे लोगों को ट्रैव डॉट नेक्स्ट करने में भी उनको परेशानी होती है. तो आप उनको ये पढ़ाओगे ट्रैव डॉट नेक्स्ट, सो बेचारे वैसे ही उनकी जान चली जाती है. तो मुझको किसी की जान लेने का बिल्कुल शौक नहीं है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट सिंपल and trying to keep it more readable. But whatever, if you are doing it like a trav.next is equal to trav.next, that is still fine. That can still work. I hope Ajinkya I had answered your question. Yeah. Chalo, go ahead. I'm thinking that you people are copy pasting, you are running it, checking whether it is working. And this is something, as I said, it is same as the last code. सिर्फ जो बियॉन्ड पोजीशन वाला जो कंडीशन जो था, वो कंडीशन सिर्फ हमको मॉडिफाई करना पड़ा. वहां पर हेड इज इक्वल टू नल, सॉरी ट्रैव इज इक्वल टू नल, दैट वाज अ कंडीशन टू बी कंसीडर्ड. क्योंकि वहां पर नल पॉइंटर है, यहाँ पर नल पॉइंटर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली माय कंडीशन हैज टू बी डिफरेंट. दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैड टेकन केयर. Now we have done del first, we have done delete at position, and the next one I leave it as a homework for you. Public void del last. Del last, I said this is your lab assignment. Go ahead and do it. Not a problem. By the way, still one function is left, and this function is bit interesting in my opinion. My opinion. Go ahead. There's one function left. Public void delete all. Public void delete all. And how do you delete all the nodes? How do you delete all the nodes? Okay. Just by saying head is equal to null, is it sufficient? Do you believe that head is equal to null is sufficient? To be frank, accede carefully. There is a bit trouble. वैसे आजकल के जो क्या कहते हैं, आजकल के जो लेटेस्ट जेवीएम्स हैं, जो न्यूयर जेवीएम्स हैं, दो जेवीएम्स आर स्मार्ट इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ. बट जो ओल्डर जेवीएम थे, हैव अ लुक एट दिस. Have a look at this. This is very interesting. Head is equal to 10. This is pointing to 20. 20 is pointing to 30. 30 is pointing to 50, 40, 50, whatever it is. And then this is pointing back to this. If you just make head is equal to null, if you just make head is equal to null, head is not pointing to anything. Hey, please pay attention. Head is not pointing to anything. But do you believe that your nodes are unreferenced now? अगर आपने हेड को नल कर दिया, अगर आपने हेड को नल कर दिया, तो do you believe that these nodes are unreferenced? You still find that the first node is pointing to the second, second is pointing to the third, third is pointing to the fourth, and fourth is pointing still to the first. Oh, sir, this is still referring to each other. Trust me, अगर आप लोग जावा 8 या जावा इवन फॉरगेट जावा 8, जावा 4 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप लोग कर रहे हो, तो गार्बेज कलेक्टर्स आर स्मार्ट इनफ. गार्बेज कलेक्टर्स आर स्मार्ट इनफ, दे अंडरस्टैंड दैट ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसमें से किसी को भी पॉइंट करने वाला कोई नहीं है. सो दिस कोड विल स्टिल वर्क. आई रिपीट वंस अगेन, इवन आजकल के जेवीएम में आपका गार्बेज कलेक्टर इतना स्मार्ट है कि वो देखता है कि इवन दो these all objects are referencing to each other in a loop, still उनको रेफर करने वाला कोई नहीं है. और सिंस उसको रेफर करने वाला कोई नहीं है, just by writing this much of code, will it work? Trust me, it will work. But that is due to the optimization of garbage collector. But what if आगे जाके let's say that कभी आपको ऐसा लॉजिक C++ के लिए करना पड़ा,
या फिर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव सी के लिए करना पड़ा, मुझको ऐसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना पड़ा जहाँ पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, तो सर ऐसे वक्त में मैं क्या कर सकता हूँ? ओह, दैट विल बी अ टफ जॉब। तो ऐसे वक्त में कुछ ट्रिक्स जो शायद आपको पता होने चाहिए, ट्रिक्स जो पता होनी चाहिए, डोंट कीप अ लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर, don't keep a linked list as a circular. I would say that let us do this in two steps. Let us do this in two steps. Step number one, let us make head is equal to null, head arrow next is equal to null. First, make head arrow next is equal to null. Moment you make head arrow next is equal to null, don't you think that ये जो linked list बन रही है, now it is not a circular linked list. The whole linked list, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ पर देखते हो, now this is a linear linked list. Is it so? Starting with 20, 20, 30, 50, 10. ये 20, 30, 50, 10 and then null. तो ये लिंक लिस्ट आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, अभी linear लिंक लिस्ट हो गई. That is the first step. And step number two, I would prefer is that I don't want to make this, I want to make this is equal to null. That is step number two. So now not a single node from this particular linked list is getting referred, and I believe this is quite better way ताकि गार्बेज कलेक्टर को अपनी अकल ज्यादा लगाने नहीं पड़े, ताकि गार्बेज कलेक्टर को अपनी अकल ज्यादा लगाना ना पड़े. दिस इज मोर सेफर वे irrespective of your garbage collection implementation, and this will ensure that your objects will be deleted. Yeah, have you got the point? Ultimately वैसे भी आपको सारे डिलीट ही करने थे. So I'm saying that I'm trying to convert step number one, convert circular list into singly linear list. And how I can do that? It is like hardly one line of code that I can write it by making head.next is equal to null. But still, in this particular case, so आपका linked list क्या कैसे होगा? Your linked list will become 20, 30, 50 and 10. 20, 30, 50 and 10, and head is still pointing to the last node. And the second thing, I can say that now delete or other, what is that? Make head null. You can simply say head is equal to null, so that head is equal to null, so that all those objects will be garbage collected. All those objects will be garbage collected. That's it. Hardly two lines of code. This is safer one to go, irrespective of implementation of garbage collection. This is what all I'm saying. That's it. वैसे आपको कोई बहुत बड़ा कोड लिखना है ऐसी बात नहीं है. This is still easy, but I'm just trying to tell you that कि अर्लियर इसमें थोड़ा सा गार्बेज कलेक्टर आपका कितना स्मार्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था. अब मैं उसकी डिपेंडेंसी निकाल रहा हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग दिस कोड bit more what is that agnostic to the garbage collector. So will it delete all the nodes? Yes, it will delete all the nodes. So can we check that? Yes, we can check that. I hope you people have understood this. Let me add the node 10. Let me add the node 20. Let me add the node 30. 3 nodes are added. 10, 20, 30 is there. That is good. 8. Delete all. And you say display. Oh, linked list is empty. Good. Array, is this clear? Try it. Check if it is working. I believe all major operations of singly circular linked list are completed. You have any questions regarding singly circular linked list? You are welcome. So the point to note over here, in this singly circular linked list, what we are doing in a singly circular linked list, we are in a singly circular linked list, what we are doing in a singly circular linked list, we are doing it quite similar to the linear linked list. Literally आपका added position and deleted position वो कोड तो हम लोगों ने as it is copy paste किया है, and then they are working directly. लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पूरे लिंक लिस्ट में कहीं पर भी नल नहीं है. तो हम लोग जो अर्लियर जहां जहां पर कंडीशन लगा देते while trav is not equal to null, now those kind of conditions we need to skip.
those kind of conditions we need to skip. इतना सिर्फ हमें याद रखना है, otherwise the exercise remains same. तो जैसे पेपर वर्क आपने कल किया था वैसे ही पेपर आपको यहाँ पर करना है। हम लोग इन माय ओपिनियन यहाँ पर कुछ भी नया पढ़ने लायक नहीं है, तो सर इसका अलग से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? आई बिलीव करना चाहिए, सो दैट नॉट टू लर्न सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, लेकिन जितना ज्यादा पेपर वर्क आप लोग लिंक लिस्ट के ऊपर करते रहोगे, लिंक लिस्ट किसी भी टाइप का हो, सो हर एक टाइप का लिंक लिस्ट का पेपर वर्क कर लो, सो दैट मोर एंड मोर पॉइंटर्स दैट यू डील विथ, you will be like more and more comfortable with the data structure, more and more comfortable with the data structure. That's what all I was saying. Anyway, if there are no questions, should we move on to the doubly linear linked list? Okay. What is doubly linear linked list? In a doubly linear linked list, why it is called a doubly? Because now each node have got two pointers. One is pointed to the next node and is pointed to the previous node. I would spend 5 minutes onto this linked list so that you understand the paperwork traps. मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि आई एम नॉट रियली ट्राइंग टू टीच यू द लिंक लिस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू डेटा स्ट्रक्चर, आई एम ट्राइंग टू टीच यू द मेथड ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर. सो द बिगेस्ट हर्डल दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोग डायग्राम या तो गलत ड्रॉ करते डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या तो डायग्राम लोग गलत ड्रॉ करते डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, या फिर उस डायग्राम को गलत इंटरप्रिट करते. या तो लोग डायग्राम गलत ड्रॉ करते हैं, या तो डायग्राम सही ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन उस डायग्राम का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग करते हैं. तो आई विल जस्ट गो अहेड एंड try to draw it. Let's say that this is one node. This is my one node, and in this one node, what all I need some data, and I need two pointers. One is pointed to the next node and a pointer to the previous node. Let's say this is the first node, and as usual, the first node contains the address of the contains the address head contains the address of the first node. What I was trying to tell you is that this is a simple one, जहां पर हमारे पास अभी दो फील्ड नहीं है नोड के अंदर. नोड के अंदर हमारे पास टोटल तीन फील्ड है. पहला फील्ड है आपका डेटा, the second field is pointed to the previous node, and then another field is pointed to the next node. Okay, this is, let's say that, but this is like only one node. What about the next? And this way you continue further, you will be having second node, you will be having third node, you can be having fourth node, and so on and so forth. You can keep on drawing as many nodes as you need. You can keep on drawing as many nodes that you need. Let us just go ahead. So let's say this is 200 with the data 20, 300 node with the data 30. शायद मैंने कल भी बताया था, आज मैं वापस याद दिला दूं. एड्रेसेस सिर्फ आपको विजुअलाइज होने के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. वैसे तो एड्रेसेस देने का काम आपके कंपाइलर का है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है. वहां पर वैसे भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है. 100, 200, 300 जस्ट टू मेक इट रीडेबल फॉर अस, वी आर जस्ट पुटिंग नंबर. रियल वर्ल्ड में आपको एड्रेसेस ऐसे राउंड फिगर में नहीं मिलते. आई होप आपको ये ऑलरेडी पता है. चलो गेटिंग बैक. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट यहाँ पर ईच नोड कंटेन्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. ये पहले नोड के अंदर पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, दैट इज 200. सो 200, दिस नेक्स्ट पॉइंटर is pointing over here. Okay, that is good. And then 300, this pointer is pointing over here. That is also good. And then this one null, okay, last pointer is pointing to the null. That is good. But apart from that, I'm saying that each node contains the address to the previous node as well. I'm trying to draw the diagram in bit better way. I'm trying to draw the diagram in bit better way. If you could appreciate that. Yes, this is 200 and this is address of the previous node. This is address of the previous node. And this is, let's say, 100, which is again the address of the previous node. Again the address of the previous node. And now it is null, so which is pointing to this. अच्छा, लास्ट टाइम आपने ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था. लास्ट टाइम शायद मैंने डायग्राम सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ किया था, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो सर वो गलत था क्या? नहीं, गलत नहीं था, बट टू माय ऑब्जर्वेशन मेनी टाइम पीपल गेट कंफ्यूज. वो जब प्रीवियस का पॉइंटर होता है
They always feel that ये जो previous का pointer है, it is pointing to this. I want to make a point over here. The previous pointer is not pointing to this. The previous pointer is not pointing to this. The previous pointer, where it is pointing to, the previous pointer is pointing to the previous node, the base address or the starting address of the previous node. So this diagram, even though we draw it usually like this, even though we draw it usually like this, you need to keep in mind कि ये उसके next को point नहीं कर रहा है. It is not pointing to this. It is pointing to the whole node. It is pointing to the whole node. And just to make it a bit more readable, probably this diagram should look ideally like this. Ideally like this. But trust me, drawing a diagram like this, makes paperwork very cumbersome. So usually जब भी हम लोग यहाँ से आके काम करेंगे, मैं ऐसा वाला diagram draw नहीं करने वाला हूँ. But understand that the meaning of diagram is this. मैं फिर से बता रहा हूँ. The next node, the next is pointing the address or the starting address of next node. And when you say previous pointer, the previous pointer is again starting address of the previous node. Don't forget that. Don't forget that. Is this clear to you? Is this clear to you? सो जब भी हम लोग कोड करेंगे, जब पेपर वर्क करेंगे, तो ये गलती आप लोग करने वाले हो, 100% करने वाले हो. तो वो एट दैट टाइम इसको याद रखना, इसको भूलना मत. तो सर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट? सर वो सिंगल लिंक लिस्ट इतना अच्छा था, एक पॉइंटर से हमारा काम हो रहा था. तो सर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना के आप क्या अचीव कर रहे हो? नॉट रियली मच. डब्ल्यू लिंक लिस्ट करके वी कैन ट्राई टू traverse in both the direction. We can traverse from first node to last node, and we can also traverse from the last node to first node. We can traverse from the first node to last node, and we can and we can also traverse from the last node to first node. हम लोग दोनों तरफ से traverse कर सकते हैं. That is possible with the doubly linear linked list. तो सर हेड पॉइंटर लगाते हैं या हेड और टेल दोनों पॉइंटर लगाते हैं? Again, choice is yours. You can make a doubly linked list with the only head pointer. You can make a doubly linked list with head as well as tail pointer. तो सर हमें कौन सा करना चाहिए? It depends on your requirement. I'm going to keep it simple. I'm going to create a doubly linked list with the head pointer only. With the head pointer only, and I'm going to make my diagrams super simple. Super simple, something like this. The head node pointing to 10, it is pointing to 20, it is pointing to 30, it is pointing to null. At the same time, 30 previous is pointing to this pointing to this. That's it. So drawing this diagram is actually, I want to draw this diagram only. This diagram only. So you just understand that if you are done enough of paperwork, you should not really have a trouble. आपको हर बार इतने 100-200 लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है. Anyway, so जहां पर आपको algorithm में लेकिन problem आएगा, it is recommended that you draw then detailed diagram with address diagram so that you can visualize it better if at all you find it any troublesome. But trust me, जिसने सिंगली लिंक लिस्ट को ठीक से प्रैक्टिकल किया है, पेपर वर्क ठीक से किया है, मैं तो कहता हूँ हर एक फंक्शन का 5-5 बार किया है पेपर वर्क एंड कम अप विद द कोड, probably you never need to learn the rest of the linked list. मैं लिस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में है, अदरवाइज वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है. जिसको एक लिंक लिस्ट आ गया उसको सारे लिंक लिस्ट आ गए, बिकॉज डूइंग लिंक लिस्ट is nothing but doing a pointer management. It's a pointer management technique. Once you understand it for one linked list, you understood it for all linked lists for all data structures. Chalo, let us go ahead and let us first do some primary changes and then we will start with the functions one after another. तो primary changes क्या है? Primary changes क्या है? I'll go ahead and again we need to write it from scratch. So I'll create a new project. File new. Oh, sorry. File new project. File new project. Java project. Okay. I'm calling it as a doubly list. Okay, it's a doubly list. I can say next. I can say finish. Done. Going well. In a doubly list. In a doubly list, I want to create a new class.
new class, let's say in a package Sunbeam, and what I want to write is that w list main. Okay, w list main se, and inside that I want to write a main function. Write a main function. अब वो डेटा एंट्री वाला कोड मैं वापस से नहीं ले रहा हूँ, so that code I'm just copy pasting. We will do the necessary changes if it is needed. तभी तक के लिए मैं इसको सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ, and I'm just getting the basic skeleton program from there. Go ahead. What is next job to be done? I need to create a class. Okay, I'll create a class of a w list. I'll create a class of a w list. How do you create a class of w list? Class ए उसका सिंगली लिस्ट क्लास बनाया था, इसका मैं क्लास बता रहा हूँ w list class. Okay, good. And inside w list, what do you need? You need first of all node class. You need the list class fields. That is good. And you need list class methods. It will be good if you people can participate. Node class. A node class हमारा कैसा होना चाहिए? नोड क्लास कैसा होना चाहिए? हाँ, नेस्टेड हम लोग बनाते हैं ताकि उसके प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सके, बट यस वी से दैट वी वांट टू मेक इट अ स्टैटिक मेंबर क्लास. तो स्टैटिक क्लास w list, static class w list, and then now you want to declare the node class fields over here. Sorry, we want to declare node class and node class fields over there, and then node class methods over there. All right, so node class fields, let us go ahead. The private node, first of all, private int data. I got the data. What is second? I want pointer to the next as well as pointer to the previous. Data plus next plus previous. Oh yes, go ahead. Private node next, that is good, and next private node previous. Oh, that is going good. We have got data, we have got previous. सर ये ऑर्डर मैटर करता है क्या? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अब किसी भी ऑर्डर में डेटा मेंबर डिक्लेयर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाय द वे, तो फिर कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करेंगे. क्या इनिशियलाइजेशन करेंगे? ऑब्वियसली डेटा इज कंसिडर्ड टू बी जीरो ओवर हियर. नेक्स्ट इज इनिशियली null and previous is also equal to null. All right. By the way, what about parameters constructor? Oh, you can always write the parameters constructor, and it is again doing something similar job. Oh, this is going well. There's nothing much to be done into this. Going well. What is next job to be taken care? Next job to be taken care, the list class fields. A list class का field क्या होगा हमारा? List के अंदर क्या होता है? Yes, it is only head pointer. अभी तो हम लोग tail नहीं कर रहे हैं. So it is hardly private node head. And then what should be the initial value? So within a constructor, what should be initialized? I should make head is equal to null. You must have seen that code almost similar है, सिर्फ एक change हुआ है, per node हमने एक और pointer ऐड कर दिया. That's it. That is good enough. Let us continue further. अब आपको क्या करना है? मैं जो बता रहा हूँ उसको ठीक से सुनो. Doubly linear linked list is quite similar to the singly linear linked list. Doubly linear linked list is quite similar to the singly linear linked list. सिर्फ सिंगली लिनियर लिंक लिस्ट में हर एक नोड के अंदर हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता था. हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता था. अब यहाँ पर हमारे पास हर एक नोड के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर भी है, हर एक नोड के अंदर हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर भी है. तो एवरी टाइम वी डू द कोडिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स. नेक्स्ट का भी हमें केयर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस का भी केयर करना पड़ेगा. आई रिपीट वंस अगेन, एवरी टाइम हमें दोनों केयर करने पड़ेंगे. हमें नेक्स्ट का भी केयर करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस का भी केयर करना पड़ेगा. So what exactly you are trying to say? What exactly I'm trying to say? Let's just go ahead and you understand when you do it practically. Let's say for example, you start writing your first function, public void display. तो सर डिस्प्ले फंक्शन में कुछ चेंज होगा क्या? डिस्प्ले फंक्शन में कुछ चेंज होगा क्या? Let us go through the diagram. Let us make a diagram and try to visualize whether I need any change for the display function with respect to the singly linear linked list. आप सर्कुलर के बारे में मत सोचो,
सर्कुलर जो आपने पढ़ा था उसको भूल जाओ and focus on a singly circular linked list. So head is pointing to the node 10, and then we have got node 20, we have got node 30, and we also have got a node 14. This is pointing to this, this is pointing to this, this is pointing to this, this is pointing to null. This is pointing to this, previous is pointing to this, previous is pointing to this, and this is pointing to the null. अगर मुझको ये लिंक लिस्ट डिस्प्ले करना है तो अभी भी मेरे को आउटपुट क्या चाहिए 10 20 30 40. तो इन दिस पर्टिकुलर केस मुझको क्या करना पड़ेगा? What should be my logic? My logic should be start from the first node, trav is equal to head, trav is equal to head, print this, print trav data, go to the next node, print this data, go to the next node, print this data, go to the next node, print this data, last वाला iteration करना है, print this data, and then oh, अब कुछ नहीं करना है, I want to stop. When I want to stop, probably when I reach null. So what code probably I want to write it? I want to write it very simple code, simply saying that I need to begin with head. I need to begin with the head. I need to print. I need to print Trav's data. I need to print Trav's data, and then I need to simply go ahead. Trav is equal to Trav's next. Trav is equal to Trav's next, and then I want to repeat it again and again. And then I want to repeat it again and again. I want to repeat it again and again. I want to repeat it again and again. Okay, that is good. But ये कब तक रिपीट करना है? ये कब तक रिपीट करना है? What is the condition? हमें कहाँ पर रुकना है? फिर से एक बार आप लोग गलत कंडीशन प्लीज मत बताओ. सी, डू द पेपर वर्क. नहीं है समझ में आ रहा है, रट्टा मत मारो. डू द पेपर वर्क, गो अहेड. ये पहले ट्रैविस इक्वल टू हेड है. क्या हमें 10 प्रिंट करना है? डेफिनेटली प्रिंट करना है. सो लेट अस जस्ट प्रिंट 10 एंड देन ट्रैविस इक्वल टू ट्रैविस नेक्स्ट. क्या हमें रिपीट करना है? क्या हमें ये इटरेशन रन करना है? डेफिनेटली करना है. 20 is to be printed. So again, go ahead, print 20, print 20, and go to the next node. Or going to the next node, again I'm saying that Travis is going to Travis next. You want to repeat, you want to repeat. फिर से एक बार क्या हमें ये लाइन प्रिंट करनी है? Absolutely print करनी है. You print 30, you print 30, and again Travis is going to Travis next. You go to the next node. Not a problem. ये लाइन प्रिंट करनी है. अरे लूप इटरेट करना है अभी. ये करना है ना? डेफिनेटली करना है, क्योंकि अदरवाइज 40 प्रिंट ही नहीं होगा. सो 40 प्रिंट नहीं होगा. गो अहेड, प्रिंट दिस. A go ahead, print this means I have to repeat this once more. So trav.data 40 is printed, and again you are saying that trav is equal to trav's next. A trav is equal to trav's next. अब trav is equal to trav's next. A what trav is equal to trav's next become? अभी trav क्या बन गया? अभी trav क्या बन गया? नल बन गया. अब मुझको रिपीट करना है क्या? अब मुझको रिपीट करना है, नहीं करना है. So what should be my condition? What should be my condition? While trav is not equal to null. That is the reason I'm saying that. आप लोग प्लीज रट्टा मत मारो. अभी ये तीसरा लिंकलेस हो रहा है और मैं हर बार एक ही चीज बता रहा हूँ और आप लोग वापस से वही गलती कर रहे हो. दैट इज रियली गुड. यू नो, अच्छी बात है. चॉइस इज यूअर्स, बट आई सजेस्ट कि एक गलती बार बार मत करो, हर बार नई वाली गलती करो. यू नो, दैट इज गुड. हर बार नई गलती से करने से इंसान ज्यादा सीखता है. अगर एक ही गलती अगर आप लोग बार बार करोगे तो आप लोग ज्यादा सीखोगे नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड. Anyway, let us just go ahead and I want to print the list. So I want to print the list. Node trav. Trav is equal to head. Okay, that is good. While trav is not equal to null. Okay, and then I want to print trav dot data. All right, and then go to the next node. Then go to the next node. That is sufficient. So will it work? Yes, it will work, and it will 100% work. But रुको, what is the advantage of having a doubly linked list? The advantage of having doubly linked list is that I can traverse in a forward direction. At the same time, I can traverse in a backward direction as well. अगर आप लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, अगर आप लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, why to write a function only for display in a forward order? I do recommend that जब भी आप लोग डबली लिंक लिस्ट के साथ काम करोगे, अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो
तो 100% whenever you do that, you always write the code twice. एक बार फॉरवर्ड डिस्प्ले का अलग से फंक्शन लिखो, फॉरवर्ड डिस्प्ले का अलग से फंक्शन लिखो, एंड ऑल्सो ट्राई टू राइट अ सेपरेट फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग in a reverse order. I recommend go ahead and write two different function. One for traversing in a forward direction and another for traversing in a reverse direction. So sir, how do I write that code? Let us go ahead. By the way, ये जो कोड था, this was simply the forward display. What about I want to make like a reverse display? You want to make a reverse display? Why don't you draw on the diagram just to see what all you need to do when you want to display in a reverse direction? आपके पास टेल पॉइंटर नहीं है, आपके पास सिर्फ हेड पॉइंटर है, इसको मत भूलना. अगर आपके पास सिर्फ हेड पॉइंटर है और अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है, मतलब आई एम लुकिंग फॉर आउटपुट एज 40, 30, 20 and 10. Now what should I do? Now having a pointer to the first node, that is possible. I do not have a pointer to the last node. अगर मुझको रिवर्स प्रिंट करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको पहले क्या करना पड़ेगा? First of all, I need to go to the last node. I hope you are getting my point. So very first step is that traverse till last node. Please note, I don't want to go on to the null. I want to go to the last node. I do not want to go to the null. I want to go to the last node. So, pehla question, is this a last node? Is it a last node? No. Go to the trav is equal to trav dot next. Is it a last node? No. Trav is equal to trav dot next. Is it a last node? No. Trav is equal to trav dot next. Is it a last node? Is it a last node? Yes. I want to stop there. What should be my condition? Yes, absolutely. Now you see that the condition looks very much clear when you are done a paperwork. So your code is not at all difficult. All I need to do is that you can start with the trav is equal to head, and while trav's next is not equal to null, you can simply say trav is equal to trav's next. So what I'm doing, अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है तो पहले आपको लास्ट नोड के ऊपर जाना पड़ेगा. So first of all, I need to traverse from the first node till the last node. So I traverse from the first node to the last node. What is like a second step? What is second step? अब क्या करना है? I guess now you start printing it, no? Now you actually start traversing it. Now you actually start traversing it. What all logic that you need? Oh, I need to print that data. Go ahead. You want to print that data. A trav dot data is to be printed. चलो trav dot data तो print हो गया, but trav dot data print हो गया मतलब 40 print हो गया. कोई मुझको बताएगा अब क्या करोगे? A 40 print हो गया. What is to be done? Now I want to go to the previous node, 30 node. How do I go to the previous node? मैं अभी 40 के नोड पे हूँ. 40 के नोड से मुझको 30 के नोड के ऊपर जाना है, तो 30 के नोड के ऊपर मैं कैसे जा पाऊंगा? Absolutely, I can go by saying trav is equal to trav dot previous. A trav is equal to trav dot previous. This will take me to the previous node. सर ये प्रीवियस नोड के ऊपर आने के बाद में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट रिपीट करना है. You want to put it in a loop, you want to repeat it once again. You want to repeat it once again? Yes, definitely. I want to print this. I want to print this. So you are repeating it once again on a second iteration. You print this, and again you say trav is equal to trav's previous. Now when the second iteration, you are saying that now a trav का previous, अब ये कहाँ पर जाएगा? 30 से it will go on to the 20. It will go on to the 20 and go ahead. It will repeat the loop once again. Yes, I want to repeat the loop, no doubt on that. You want to repeat the loop, continue. Printf trav data, a printf trav data, you print this as well. You print this as well, and now you say that again trav is equal to trav previous. Yeah, again trav is equal to trav previous. Definitely, I want to go to the previous node. Should I repeat this once again? एक इटरेशन और करना चाहिए 100%, क्योंकि अभी तक 10 प्रिंट नहीं हुआ है.
I have to still continue. I can simply say that printf trav data. Printf trav data, that will print 10 also. 10 print हो गया. 10 print होने के बाद में trav is equal to trav's previous. Trav is equal to trav previous. What is that? Trav is equal to trav's previous. What is that? Now it will take me to the null. Oh, it is taking me to the null. And now next iteration चाहिए नहीं. I want to stop it over here, right? अभी यहाँ पर रुक जाओ. अगर आपको यहाँ पर रुकना है, have a look at this. अगर आपको यहाँ पर रुकना है, what is your condition? Where you stopped? Oh, I stopped when trav become null. So you go ahead, you simply say trav is not equal to null. A trav is not equal to null. So this is my entire code. So I'm saying that, so it's a two-step process. Pehla step है traverse till the last node, and then traverse and print each node in reverse direction. A reverse direction, all these efforts I need to take. So let us just go ahead and try to do it practically. That is what a code. This is like a reverse display code that we are trying it. Let's go ahead and do it. So I'm looking for printing in a reverse direction. So reverse list. So first step, what is the first step? First step is traverse till last node, and then print all nodes in reverse direction. Chalo, you want to traverse till last node? Traverse till last node. How do we do that? So while trav.next is not equal to null, while loop के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, मैं करली ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूं. So trav is equal to trav.next. That we have done, and then you start printing it all in a reverse direction. So you print it and you go to the trav.previous. That's it. So this will print both display in a forward order as well as display in reverse order. What I will do is that जहां जहां पर मेन में मुझको प्रिंट करना होगा, I would prefer taking it in both ways. कौन सा? Forward as well as reverse both. I'll prefer that. So this is my doubly linked list. Doubly linked list is equal to new doubly linked list. All right. And inside this, I'll print it both the forward as well as display in like a reverse. So that's it. Should I like that? Should I like that? Trav.previous is equal to trav.next. Trav.previous is equal to trav.next. Are you trying to modify the previous address? Please note Ekansh, जब लोग previous कहते हो, previous means you're talking about this part. Previous means you're talking about this part. And if you're talking about this part, जब आप लिखोगे trav.previous is equal to trav.next, what you're basically doing, whatever is the address inside this address, you are actually writing it over here. So this will become 0. Is it what you want to do? Have you got the point? See, if this is trav, I'm repeating once again. If you are written trav.previous is equal to trav.next, what will happen? Trav.previous. Trav.previous is nothing but this pointer. Trav.next is nothing but this pointer. What you're doing, you're assigning this pointer over here. So ultimately, this will become 300. This will become 300. Is it what we want to do? No, not at all. We do not want to do this. So whatever statement that you are writing, it doesn't make any sense at this context. Write in a reverse order. Write in a reverse order in the sense, अभी भी हम लोग रिवर्स प्रिंट ही किया है. हम लोगों ने अभी भी रिवर्स प्रिंट ही किया है. So अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना है, you want to go to the previous node, and to go to the previous node, the simple, जैसे हम लोग कहते थे trav is equal to trav.next, it was taking me to the next node. Simply say trav is equal to trav.previous, it will take you to the previous node. It's very easy. Okay. If you still have any confusion, please wait after the lecture. We can try to sort out there, right? No issues. हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे. Doubly linear linked list, or sorry,
हाँ, so we are saying that there are both ways displays are available, forward display as well as reverse display, और ये दोनों लॉजिक हम लोग लिखे हुए हैं. Now it's time. रिवर्स ऑर्डर इज डन. सो फॉरवर्ड भी हो गया, रिवर्स भी हो गया. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. नाउ लेट अस थिंक ऑफ, तो सर अगर हमें नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट में, तो क्या हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे? इन माय ओपिनियन यू नीड टू जस्ट टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो हम लोगों ने, जो हमको प्रीवियस पॉइंटर के लिए चाहिए. वी हैव टू टेक फ्यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर द प्रीवियस पॉइंटर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका सिंगली लिंक लिस्ट का जो कोड था, सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट का जो कोड था, वो एज इट इज चलना चाहिए, एज इट इज चलना चाहिए. Let us go ahead. Let us try to draw the diagram. And by the way, ये doubly linear linked list है. This was basically the display operation that we were discussing. And after the display operation, now I'm talking about operation, add last operation. So get ready. So for the add last operation, you start with, this is head pointer. Let's say pointing to the 10. 10, it is pointing to 20. This pointing to 30. This pointing to 40. And this is pointing to the next. Okay, that is good. 40's previous is pointing to 30, 30's previous is pointing to 20, 20's previous is pointing to 10, and 10's previous is again pointing to null. This is my doubly linked list. Again, first draw the diagram and ask question to yourself कि डायग्राम में पहले क्या चेंज होना चाहिए. पहले डायग्राम के चेंज समझो, ऑटोमेटिकली बचे हुए आ जाएंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग, you want to create a new node, you want to create a new node and you want to initialize it. डोंट फॉरगेट दैट इसका नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल नल रहने वाले हैं. जब इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, अपने नोड के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, नेक्स्ट को नल किया, अपने प्रीवियस को भी नल किया है, सिर्फ अपने डेटा यू हैव इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यू 50. दैट इज डन. व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? अब डायग्रामेटिकली कैन यू प्लीज टेल मी, डायग्रामेटिकली कि मुझको यहां पर अभी क्या करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. What should happen if you want to add a node at the end? If you want to add a node at the end, diagrammatically what should happen? हाँ, न्यू नोड का नेक्स्ट वैसे भी नल ही आने वाला है, न्यू नोड का प्रीवियस भी नल ही आने वाला है, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही होने वाला है. हमें आगे क्या करना है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. यस, आई एग्री, आई नीड टू ट्रैवर्स टिल द लास्ट नोड. चलो, यू ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, बट आगे करना क्या है? व्हाट आई वांट टू डू द नेक्स्ट, चेंजेस क्या क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, देन नेक्स्ट नोड, ट्रैव के नेक्स्ट में, ट्रैव के नेक्स्ट में अभी तो नल है, तो उसके नेक्स्ट में हमें न्यू नोड चाहिए. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ट्रैव के नेक्स्ट में हमें न्यू नोड चाहिए, करेक्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? इतना काफी है? लुक एट द डायग्राम. इज इट सफिशिएंट? नॉट रियली. वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा. द न्यू नोड्स प्रीवियस, ए न्यू नोड्स प्रीवियस also should point to the trap, also should point to the trap. अगर आप लोग आपका कोड कंपेयर करते हो सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट का, सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर हमने क्या कोड लिखा है? सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर हमने कोड लिखा है, ट्रैव को लास्ट नोड तक लेके जाओ, दैट इज फर्स्ट स्टेप. फिर ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड लिखो, दैट इज ऑल्सो रिटर्न. वन लाइन एक्स्ट्रा दैट यू नीड, ए वन लाइन एक्स्ट्रा यू नीड. विच वन लाइन एक्स्ट्रा यू नीड? न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव आना चाहिए. ये छोड़ के आपको कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट. मैं फिर से बार बार बताऊंगा, आपको बुरा लगे, अगर किसी को बुरा लग रहा है, स्पेशली बुरा उन लोगों को लगेगा शायद जिन्होंने कल पढ़ाई नहीं की है. ठीक है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. दैट वाज द रीजन आई वाज सेइंग दैट कि कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, और लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके बाद में जो आपने करना चाहिए था पेपर वर्क, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज मोर एंड मोर पेपर वर्क दैट यू आर डन विद द सिंगल लिंक लिस्ट, यू रियलाइज दैट अरे यहाँ पर अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे. वापस से ट्रैवर्स टिल लास्ट नोड, सेम कोड एज ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. गो अहेड, ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड ऐड करो, सेम कोड एज ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. लास्ट स्टेप, न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव को ऐड करो, दैट्स इट. हाँ, सो टुडे इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ यस्टरडेज लैब वर्क, आई सी. एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट ओनली. एनीवे, तो चलो हम लोग आगे जाते हैं. पब्लिक वॉइड, मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका इस साल का, नए साल का गिफ्ट है लिंक लिस्ट. सो समथिंग दैट यू कैन एंजॉय. एनीवे, एट लास्ट इज इक्वल टू इंटीजर वैल. एंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ वापस से, आई डू नॉट रियली वांट टू वेस्ट टाइम.
Singly linked list, addless function, control C, नहीं नॉट दिस वन, ये टेल पॉइंटर का कोड है ना, टेल पॉइंटर वाला कोड नहीं चाहिए। कल का जो हम लोगों ने बेसिक लिंक लिस्ट जो बनाया था, मुझको वो वाला कोड चाहिए, एंड आई वांट टू कॉपी दैट कोड। वो कोड कहाँ पर है? डे 2 के अंदर है, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर है। ओके हाँ, ये रहा आपका एडलस का कोड, एडलस कोड, एंड समवन यू जस्ट कॉपी, you go back, you say paste. So linear linked list का basic code हो गया है। Now what is the extra thing to be added? Just say that the what is that? New nodes, new nodes previous to last node. Last node in the sense trap. So all I need to do is that new node dot previous is equal to trap. खत्म हो गया। The code is over. सर ये काम करेगा? करेगा मतलब करना ही चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। You just go back, add last. Okay. Oh sorry, I run the previous code. Let me run it once again. Right click, run as Java application. I see that. Chalo, add last 10. Okay, add last 20. Add last 30 and display. A display linked list is displayed in a forward order 10, 20, 30. Linked list is displayed in a reverse order 30, 20, 10. Is it working? Absolutely. Why don't you try it? Check it. Good, Akshay. I'm waiting. Take a code, copy paste it, run it, check. जैसे दैट ऑलरेडी आपके पास सारे कोड है, सिर्फ हम लोग छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं। सो अभी तक जितना कोड किया है, जब तक आप लोग कोड कर रहे हो मैं सिर्फ रनिंग कमेंट्री दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अभी तक जितना कोड आप लोगों ने किया है उसमें हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं? यू सी द फर्स्ट लाइन ऑफ चेंज, क्लास नोड के अंदर हमने नोड प्रीवियस ऐड किया, दैट इज वन चेंज। उसके बाद में उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रीवियस इज इक्वल टू नल, प्रीवियस इज इक्वल टू नल लाइन्स ऐड किए, दीज आर लाइक एडिशनल चेंजेस। देन यू कंटिन्यूड फर्दर, डिस्प्ले फॉरवर्ड हमारा पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो दैट कोड इज ऑलमोस्ट सेम दैट इज सेम, नो चेंज। डिस्प्ले रिवर्स का कोड हम लोगों ने यहाँ पर नया ऐड किया, एंड देन वी आर गोइंग विद द एडलास फंक्शन। एडलास फंक्शन में हमने नया कोड क्या किया है? इन एडलास फंक्शन वी आर सिंपली सेइंग दैट कि जैसे लीनियर लिंक लिस्ट का कोड था, वही कोड हमने कॉपी पेस्ट किया, और कॉपी पेस्ट करने के बाद में न्यू नोड के प्रीवियस में इज इक्वल टू लास्ट, लास्ट इन द सेंस ट्रैप। दैट इज द ओनली थिंग वी हैड डन, नथिंग एक्स्ट्रा इज डन देयर। Okay, I'm just going back. Someone has got trouble. I'm just going back to the reverse function. आप लोग तब तक करो चाहिए तो। I'm just repeating the reverse function, reverse नहीं, reverse display function। हम लोग लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिवर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। तो व्हाट इज रिवर्स डिस्प्ले फंक्शन? ऑल वी आर डन। रिवर्स फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। अगर आपको रिवर्स डिस्प्ले करना है तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? मेरा आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20 एंड 10। मेरा आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20 एंड 10। ओके, अगर आपका आउटपुट होना चाहिए 40, 30, 20, 10, टेक अ लुक एट दिस। व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू फर्स्ट go to the last node. How do I go to the last node? You start with Travis equal to head. Hey, this is not last node. You go to the next. Travis equal to Travis next. This is not last node. Travis equal to Travis next. This is not last node. Travis equal to Travis next. This is the last node. So we have just written a piece of code where we are saying that Travis equal to head, while trav dot next is not equal to null, trav is equal to trav dot next. ऐसे करते 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 we have reached till the last node. लेकिन अभी मुझको करना क्या है? I want to print all the nodes in a reverse direction. So right now, where is the trav? Right now the trav is at the end. Now if the trav is at the end, what all I need to do?
But all I need to do is that, and to simply, I need to simply print that node and then go to the previous node. I have to simply print that node and go to the previous node. I have to simply print that node and go to the previous node. Correct? So you just print that node and go to the previous node by saying trav is equal to trav dot previous. And you want to keep doing this, and you want to keep doing this, you want to keep doing this while trav is not equal to null. While trav is not equal to null. That's it. Nothing extra we need to do. I hope Ashraf it is clear, right? All right. If idleness is done, if idleness is done, and if you understood that, let us move further and talk about the next one. Next one is, let's say, add first function. तो सर add first में क्या लॉजिक लगाना है? Let us first draw the diagram and then we will think of logic क्या लगाना है, बाद में देखते हैं. So again, we have got a head, 10, 20, 30, 40. Okay, this pointing to the previous, this pointing to the previous, this pointing to the previous, this pointing to this. Okay, all done. अब क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, you want to add a node at the previous, early add करना है. Early add करने के लिए obviously you want to create a new node and you want to initialize that node. Yes, you want to create a new node, you want to initialize that node. By default इसका next और previous null null रहने वाला है. Look at the diagram and tell me which all changes that you need. Look at the diagram, tell me which all changes that we need. What all things that we need to do in this case. हमें दो चीजें देखनी है, एक तो इसके अंदर चेंजेस क्या है, ये पहली चीज, और दूसरी चीज how it is different than the single linked list. So yes, absolutely right. New nodes next is equal to head. Yes, we need to take care of this. What is second? I guess इतना काफी नहीं है. New nodes next is equal to head. इतना काफी नहीं है. Look at the diagram. The diagram should also say that head arrow previous is equal to new node. Yes, head arrow previous, head dot previous, arrow CC pluses में होता है. Head dot previous is equal to new node. That is done. And what is third thing? What is third thing? ये add first है. Add first है, तो head should always point to the first node. Head should always point to the first node that is in front of you. That is in front of you. Nothing extra or nothing special I need to do with this. Done. So there are three steps to be followed. Step number one, three nahi, actually four steps. Step number one is that you want to create a new node. You want to create a new node and you want to initialize it. That is good. Second step, new nodes next should point to this head. That is okay. Third step, that is heads previous is pointing to the new node. And a fourth step, you say that head is equal to new node. इसके अलावा कुछ नहीं करना है. Can you please tell me इसमें से कौन सा स्टेप आपके सिंगली लिंक लिस्ट के कोड में नहीं है? इसमें से कौन सा कोड आपके, ये सिर्फ स्टेप नंबर 3 नहीं है, मैं फिर से वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ प्रीवियस के पॉइंटर के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेप था, दैट इज द ओनली स्टेप मिसिंग. रेस्ट एंटायर कोड इज स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम, स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम. इट इज जस्ट अगेन अ पॉइंटर मैनेजमेंट. तो चलो जाते हैं पीछे. एड फर्स्ट वहां से उठाते हैं और एड फर्स्ट यहां पर आके लगाते हैं. वहां से एड फर्स्ट उठाया, यहाँ से एड फर्स्ट उठाया और यहाँ पर आके इसको डाल दिया. ओके, ऑल राइट, इट इज देयर. एंड देन सो क्रिएट अ न्यू नोड, ये स्टेप ऑलरेडी था. न्यू नोड नेक्स्ट शुड पॉइंट टू द हेड, ये भी ऑलरेडी था. हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये भी ऑलरेडी था. ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट इज दैट न्यू नोड्स previous to head and all I can do is that new node dot previous is equal to head. That's it. So will it work? Yes, it will work. But but any special cases to be considered in this case? Any special case to be considered for this? Atlas के लिए हमको शायद चेक करना चाहिए. Another special case to be checked. The special case, if linked list is empty linked list, if head is equal to null, what is to be done?
In this case, if list is empty, this is a special case. If list empty, if list is empty, करना क्या हो तो बताओ. लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, नया नोड क्रिएट करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट इज नेक्स्ट जॉब टू बी डन? इन दिस केस आपको सी हैव अ लुक एट दिस. इन दिस केस हेड का प्रीवियस आप लोग वैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते हो. ये जो स्टेप नंबर 3 है, द स्टेप नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज हेड ऑलरेडी आपका नल है. हेड आपका ऑलरेडी नल है, तो हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल. दिस पार्ट इज गोइंग टू फेल. इट इज गोइंग टू गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन. तो सर क्या करना चाहिए? ए वैसे इस केस में करना क्या चाहिए? दैट इज द स्पेशल केस, नो डाउट ऑन दैट. इस स्पेशल केस में करना क्या चाहिए? Obviously, this node itself will become your first node. This node itself will become your first node. Then simply say that new node is first node. That is what all you need to do. And if you want to do this much, just go ahead and write there the one extra special case. So special case, if list is empty. If list is empty, do the needful. So I can simply check if head is equal to null. और एक काम करते हैं, वापस से जैसे हम लोगों ने इससे पहले इज एम्प्टी का फंक्शन लिखा था, वी कैन ऑलवेज राइट जो हम लोगों ने उसमें लिखा था वैसे हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं. पब्लिक बुलियन इज एम्प्टी, जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल, बाकी कुछ नहीं है. रिटर्न हेड इज इक्वल टू नल. इफ द कंडीशन इज ट्रू it will return true. If condition is false, it will return me false. So you go ahead, you check if is empty. If is empty, just simply say head array head is equal to new node. Head is equal to new node. Otherwise the general case where you want to add the node at the beginning. This general case where you want to add the node at the beginning. Chalo, go ahead, copy paste, run it and check if it is working for you. Shubham is asking the question, why new node dot previous is equal to head in general case? Wait for a minute. Let me first write it and I'll come back to that. General add node at the start. Okay, this is done. At first we have done. Let me check whether it is working. रन करके देखता हूँ और उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ. 2 add first 10, 2 add first 20, 2 add first 30, 10 उसके पहले 20 उसके पहले 30 and then you say display 30 20 10. That is working well. You find that reverse list there is something problem. Reverse list something there is a problem. We have missed something or something like that. We can check it, and that is the reason I told you please go ahead and print in both direction. क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला कोड हमेशा चलता है, रिवर्स डायरेक्शन वाला कोड यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं. और हाँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, कॉपी पेस्ट के बाद में एक स्टेप अपना रह गया था क्या? ओ सॉरी, माय मिस्टेक. न्यू नोड्स प्रीवियस टू हेड नहीं, माय मिस्टेक. जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो अलग था. मैंने एक्सप्लेन क्या किया था आपको? व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन? In this case, what should happen? This should happen. What is this? What is this? Heads previous, the heads previous should point to new node. Heads previous should point to new node. So, हो जाता है. So, I'm saying that heads previous to new node, that was required. So, that was my actually flow में मैं भूल गया कहीं पर, तो कोई बात नहीं. Done. I hope not an issue. आई गेस यही चीज शुभम या कोई तो पूछ रहा था. हाँ, यस शुभम, जानवी, आई गेस यस यू आर आस्किंग द समथिंग सिमिलर, राइट? या दैट वाज माय मिस्टेक. चलो चेक करते हैं, इज इट गोइंग वेल? 3 नहीं 2 एड फर्स्ट 10, 2 एड फर्स्ट 20, 2 एड फर्स्ट 30. डिस्प्ले, ओ नाउ इट इज वर्किंग वेल. 30 20 10 और रिवर्स में 10 20 30. इट इज गोइंग करेक्टली. दिस वॉज माई मिस्टेक. मैं फिर से एक बार डायग्राम में जाता हूं. हमें यहाँ पर क्या करना है? न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डालना है, नो डाउट. और जनरल केस में हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डालना है. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट वहां पर लिखते वक्त
शायद ये मैं किसी फ्लो में गलत कर गया. I need to go and say that head dot previous is equal to new node. Head dot previous is equal to new node. So please go ahead, try it and confirm. Okay, no problem. If your list is empty, if your list is empty, if your list is empty, if the list is empty, please understand that will my current code work? अगर जनरल केस का कोड लिस्ट इज एम्प्टी होगा तो ये काम करेगा क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी यू आर सेइंग दैट न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यू नोड, दिस वाज माय न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ये वापस से नल हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां पर आएगा? व्हेन आई से हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड. हेड डॉट प्रीवियस, टेक अ लुक एट दिस. हेड अभी नल है, नल डॉट प्रीवियस अगर मैं करता हूं, it will straight away give me null pointer exception. So obviously it means that सिंगली लिंक लिस्ट में हमको कोई स्पेशल केस नहीं कंसिडर करना पड़ा था. सिंगली लिंक लिस्ट में हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लिखा था और वो चल भी गया था. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये जनरल केस का कोड स्पेशल केस के लिए नहीं चल रहा है. नहीं चल रहा है तो आपको नया कोड लिखना चाहिए. ये नया कोड क्या लिखना चाहिए? इफ योर लिस्ट इज एम्प्टी, देन यू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ऐसे केस में नए नोड के साथ मुझको क्या करना होता है? अगर आपका लिस्ट एम्प्टी है और आपने नया नोड क्रिएट किया है तो हमें क्या करना चाहिए? जो नोड आपने क्रिएट किया है उसी को फर्स्ट नोड मान लेना चाहिए. उसी को फर्स्ट नोड मान लेना चाहिए. जस्ट गो अहेड एंड यू मेक इट 100. दैट्स इट. ये जो नया नोड का एड्रेस है उसको हेड में डाल दो. दैट इज व्हाट योर स्पेशल केस. इफ योर लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपली से head is equal to new node and nothing much you need to do. I guess it is clear. Who was asking the question? Someone was asking the question. All right. Yeah. Any trouble is there? You're welcome. Hoping that it is working for you. And we were talking about both adding at the last, adding at the first, things are going well. तो सर अभी बचा क्या? Again, go ahead. Edit position बचा हुआ है, delphus बचा हुआ है. So we will continue further. You can do bit of paperwork and you can think of how add at a given position should work. We'll take another break for 10 minutes and after the break, we'll continue on that. Meanwhile, you have any questions? Feel free to post. Okay, welcome back. What we are talking about, there is a question. Head dot previous means previous of newly added node. Janvi, I was knowing that ये confusion होता है और ये confusion ना हो इसीलिए मैंने ये diagram draw किया था. I hope Janvi you can take a look at this diagram and this diagram will tell you better that whenever we talk about previous, the previous always means the address of the previous node. It is the address of the previous node, not the previous part, not the next part. हम लोग पार्ट का एड्रेस नहीं लिख रहे, हम लोग पूरे के पूरे नोड का एड्रेस रख रहे हैं. तो जब भी हम लोग कहते हैं कि इट इज प्रीवियस, किसी भी नोड का प्रीवियस, किसी भी नोड का प्रीवियस का मतलब होता है उस नोड के पहले जो नोड है उस नोड का एड्रेस, पूरे नोड का एड्रेस, नोड के प्रीवियस पार्ट का एड्रेस या नोड के नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस, ऐसा हम लोग नहीं कह रहे. ये जो 100 है, इट इज एड्रेस ऑफ द होल नोड. सो द क्वेश्चन
that you had as head dot previous means previous of newly added node. No, not really. Head dot previous, head dot previous, in this particular case, head dot previous should point to this base address of the whole node. It should point to the base address of the whole node, and that is what the code that is written is head dot previous is equal to new node. It is not written as new node dot next or new node dot previous. It should be null. Then for add first, previous is node class field. It should be null. Then for add first, see what I'm saying is that when we are doing add first, Janvi, please pay attention. Anything is confusion is there, you are welcome. Do ask. Head when we are talking about, listen. Head we are talking about. So head is pointing to the node 10. If you want to add a node at this moment head is null only. हेड का प्रीवियस एट दिस मोमेंट नल ही है, हेड का प्रीवियस यहाँ पर नल ही है. अब मुझको क्या करना है, मुझको एक नया नोड यहाँ पर ऐड करना है. जब मैं नया नोड ऐड करूंगा तो क्या होना चाहिए, इस नोड का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड. बट इन दिस केस ये जो हेड का प्रीवियस अभी जो नल है, जो ऑलरेडी नल है, अब मुझको उसको नल नहीं रखना है. आई वांट टू ऐड अ नोड बिफोर हेड. if I'm adding a node before head, then definitely this should point to this node. This should point to this node. So we need to say head dot previous is equal to new node. Are you getting Janavi? And once you have done that, उसके बाद में अगला स्टेप है you make head is equal to new node. When you make head is equal to new node, obviously ये जो नया नोड बनाया था उसका प्रीवियस तो वैसे भी नल ही तो है, उसका प्रीवियस वैसे भी नल है. That is not at all a problem. The sequence in which we are doing is important. No problem. Next. Any other questions are there? Yes, you are welcome. And if no question is there, I am going ahead. I'm going ahead. We are still into the doubly linear linked list. And with the doubly linear linked list, you talk about this is, let's say, head pointer. Let's say it is pointing to 10. 10's next is pointing to 20. 20's next is pointing to 30. 30's next is pointing to 40. And 40's next is null. 40's previous is pointing to 30. 30's previous is pointing to 20. 20's previous is pointing to 10. 10's previous is pointing to null. And now I'm saying I want to add a new node. Where do I want to add a new node? I want to add a new node at, I want to add a new node in this position. What is that? Fourth position. So मुझको एक नया node add करना है. Let's say 50. A नया node का value 50 है. And then new value. The new node's value is equal to 50. And then the position is equal to 4. This is my requirement. If this is your requirement, you go ahead. This is 50. And this is nothing but a new node. What is to be done next? What is to be done next? You continue further. All I want to do is that take a look at the diagram and try to understand. अगर 50 मुझको यहाँ पर ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट इसका नेक्स्ट भी नल है, बाय डिफॉल्ट इसका प्रीवियस भी नल है. हमने कंस्ट्रक्टर में उसका नेक्स्ट और प्रीवियस नल किया हुआ है. तो यहाँ पर मुझको कोड में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. फर्स्ट डायग्रामेटिकली टेक अ लुक एट दिस, व्हिच ऑल थिंग्स वी नीड टू डू. अल्टीमेटली सेटअप क्या करना पड़ेगा. यस, न्यू नोड का सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. नो डाउट, आई एग्री. आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. सो यू विल ट्रैवर्स टिल पोजीशन -1. Oh, I will traverse till position -1. That is absolutely fine. This is done. Traverse position -1. Then you continue further. New nodes next. New nodes next is over here. A new nodes next pointing to this, and new nodes previous is also pointing to this. I guess ये दो चीजें हमको सेट करनी है. And once, by the way, is it sufficient? New nodes next and new nodes previous. न्यू नोड का नेक्स्ट आपको सेट करना है ट्रैव के नेक्स्ट को. आई अंडरस्टैंड. न्यू नोड का प्रीवियस हमें सेट करना है 30 को. आई अंडरस्टैंड. बट इज दिस सफिशिएंट? इज दिस सफिशिएंट? और भी कुछ चाहिए आपको शायद. हाँ, और भी कुछ चाहिए,
क्योंकि अगर आप लोग नया नोड ऐड कर रहे हो तो टोटल 4 पॉइंटर चेंज होने वाले हैं. यस, यू सी दैट trav का next it should point to this, and at the same time the node 40 is previous should also point to this. A 40 is previous should also point to this. तो आई गेस हमें यहां पर 4 पॉइंटर्स के साथ खेलना है, 2 पॉइंटर के साथ नहीं खेलना है, 4 पॉइंटर के साथ खेलना है. Let us go step by step and try to understand the steps one after another. Very first step that I need to do is that, very first step that I need to do is that I need to first of all traverse till position -1, or traverse till position -1. This is my first step. Okay, that is good. What is my second step? I would prefer, as I say that, I personally do not like writing a code trav.next.next or trav.next.previous. ऐसे कोड मुझको अच्छे नहीं लगते. I just want to keep it simple. And to keep it simple, what I suggest is that we can have one more pointer. If we can have one more pointer to the next node after trav. मतलब जिन दो नोड के बीच में आपको ऐड करना है, तो you can have one more pointer to that. So एक पॉइंटर अभी मेरे पास ट्रैव पॉइंटर है, जिसके बाद में नया वाला नोड ऐड होना चाहिए, और बाद में दूसरा मैंने उसके आगे वाला नोड ले लिया है टेम्प, जिसके पहले मुझको नया वाला नोड ऐड करना चाहिए. नाउ आई हैव गॉट टू डिफरेंट पॉइंटर्स, सो आई कैन मेक द कोड बिट मोर रीडेबल. नाउ बाय लुकिंग एट द कोड, कैन यू प्लीज टेल मी अब मुझको क्या करना चाहिए. डायग्राम में मेरे पास ट्रैव है, मेरे पास टेम्प है, सो व्हाट शुड बी माय थर्ड स्टेप. व्हाट शुड बी माय थर्ड स्टेप? ऑब्वियसली पहले नए वाले जो नोड्स हैं, पहले जो नए वाले हैं, वापस एक बार, ऑलवेज फॉलो द रूल मेक बिफोर ब्रेक. तो जो नए वाले नोड्स हैं, इट इज गुड आइडिया कि पहले उनके नेक्स्ट प्रीवियस हैंडल कर लो, और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग ट्रैव और टेम्प है उनको उसके बाद में चेंज करो. आई बिलीव दैट. सो लेट अस गो अहेड. ए न्यू नोड नेक्स्ट, ए न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आई सी दैट इट इज वेरी क्लियर. न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प. New nodes next is equal to temp, not temp previous. New nodes next is the address of a next node. 40 के अंदर किसका एड्रेस होना चाहिए, सॉरी 50 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, 50 के नेक्स्ट में 40 का एड्रेस होना चाहिए. सो यस, 50 नेक्स्ट इज इक्वल टू temp. डन. बाय द वे और क्या होना चाहिए? देन यू कंटिन्यू फर्दर. 50 के प्रीवियस में उसके पहले वाले नोड का 30 का एड्रेस होना चाहिए. सो न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल टू दिस इज डन. सेकेंड. थर्ड वन. अब व्हाट इज थर्ड स्टेप? अब ये ट्रैव और टेम दो बचे हुए हैं. ट्रैव का नेक्स्ट अभी अभी आपको मॉडिफाई करना है. गो अहेड, मॉडिफाई द ट्रैव्स नेक्स्ट, और ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. ट्रैव्स नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. एंड लास्ट थिंग, व्हाट इज द लास्ट स्टेप टू बी लेफ्ट? और एक पॉइंटर बच गया जो आपका टेम्प है. टेम्प का प्रीवियस उसने वापस से 50 को पॉइंट करना चाहिए. सो दैट शुड बी लाइक स्टेप नंबर 6. सो स्टेप नंबर 1, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. स्टेप नंबर 1, you take a trav pointer and then you start traversing till position -1. Traverse till position -1, or that is your first step. Take one extra pointer to make code readable, which is not really required, but just to make the code readable, you take temp is equal to travs next. Temp is equal to travs next. That is second. Third step. Step number three, new nodes next is equal to temp. A new nodes next is equal to temp, and new nodes previous is equal to trav. New nodes previous is equal to trav. Okay, that is good. What is next step? अब बचे क्या? Trav का next और temp का previous बचा है. So you simply say trav's next is pointing to new node. So this link is no more valid. आपने old link break कर दिया, नया वाला link set कर दिया. And finally, temp's previous is equal to new node. Temp's previous is equal to new node. Again आपने ये वाला भी link break कर दिया. Now you find that my linked list is clear. It's just now you can check that 10 के आगे 20 है, 20 के आगे 30 है, 30 के आगे 50 है, 50 के आगे 40 है. Look like my linked list is done good. Is this clear to everyone? Now if it is clear to everyone, let's move further. Let's move further and let's move further and try to talk in terms of code. Again, I would still recommend you go back and see the code of a linear linked list. Linear linked list में already ये code लिखा गया है, except
ये जो प्रीवियस पॉइंटर मॉडिफाई करने, कौन सा, न्यू नोड का प्रीवियस ए दिस स्टेप और टेम्प का प्रीवियस, ये दो लाइंस अगर आपने छोड़ दिए तो बचा हुआ सारा कोड ऑलरेडी वहां पर भी है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कोड ऑलरेडी वहां पर भी है, वहां पर सिर्फ हमने अलग से टेम्प नहीं लिया था, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट अदरवाइज इट इज द सेम कोड, यू कैन कॉपी पेस्ट इट एंड कैन ऐड दिस स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 6। रेस्ट एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत है ऐसा मुझको नहीं लगता है, इफ यू कुड ऑब्जर्व द कोड एंड इफ यू कुड रिकॉल द कोड ऑफ व्हाट वी आर रिटन अर्लियर। सो आई एम जस्ट गोइंग बैक, singly linked list, added position. Sorry. Yeah. So go ahead and you do it one by one. You go ahead, do it one by one. What you're saying is that allocate a new node. Yes, we have done that. You want to traverse till position -1. Yes, we have done that as well. We have traversed till position -1. No problem so far. What is next? Then I'm saying that take temp pointer to node after trav, it node after trav, so temp is equal to trav's next, temp is equal to trav's next. So we have declared one more extra pointer, we have invested one more extra pointer, temp is equal to trav's next. This is also done. What is next job? In new nodes next, abhi check karte hain diagram kahan par gaya. So this traversing till this part is done, temp is done. थर्ड स्टेप, न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। वैसे यहाँ पर हमने लास्ट टाइम वैसे कोड लिख के रखा हुआ है, न्यू नोड्स नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रैव्स नेक्स्ट, सो दैट इज नथिंग बट सिंपली जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल इज इक्वल टू टेम्प। वैसे ट्रैव्स नेक्स्ट रखा तो भी चलने वाला है, नो चेंज। थर्ड स्टेप और द फोर्थ स्टेप, न्यू नोड्स प्रीवियस इज इक्वल टू ट्रैव, लेट मी ऐड इट देयर। सो न्यू नोड्स प्रीवियस टू ट्रैव, so new nodes dot previous is equal to trav, we have taken care of that. You continue further, you continue further. Step number 5, trav's next is equal to new node. You find that trav's next is equal to new node, already code is there. The last step that is left, what is that, temps, ये जो next वाला node है इसका previous new node को point करना चाहिए. You go back, simply say temps previous to new node. So you simply write a code, temps previous is equal to new node. That's it. Is it sufficient? Yes, it is more than sufficient. No special coding is really required. तो अगर आपने ठीक से नोट किया, हम लोगों ने इफेक्टिवली दो लाइन्स ऐड किए। कौन कौन से दो लाइन्स ऐड किए? न्यू नोड का प्रीवियस का लाइन और टेम्प का प्रीवियस का लाइन। सर ये इतना सब कुछ याद कैसे रखेगा? ये याद मत रखना। अगर याद रख रहे हो तो टेक इट ग्रांटेड, आपसे लिंक लिस्ट कभी नहीं बनने वाला है। कीप इट वेरी सिंपल, ड्रॉ द डायग्राम। मैं सारे स्टेप्स आपके सामने करके दिखा रहा हूं, यू जस्ट फॉलो द सेम स्टेप्स, इट शुड गिव यू द रिजल्ट। तो सर अगर गलत हुआ तो होने दो, अगर गलत हो जाता है ट्राई इट अगेन, फिर गलत हुआ तो ट्राई इट अगेन। सो पहले ऑन पेपर तो सही कोड आना चाहिए, और जो आपने ऑन पेपर डायग्राम में ड्रॉ किया है एक एक लाइन को मार्क करो, एक एक लाइन को जावा के कोड में कन्वर्ट करो, एक एक लाइन को जावा के कोड में कन्वर्ट करो। मैं फिर से एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। ऑब्वियसली यू नीड टू ऑलवेज एलोकेट अ नोड। यस वी एलोकेट द नोड, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ये अभी तो आपको पता चल गया है। हाँ, next step, you need to traverse, what is the first step? Oh, actually you need to traverse till the position -1. How to traverse till position -1? A code you already know, I is equal to 1, I is less than position -1, I plus plus, trav is equal to trav dot next. इससे हम लोग position -1 के ऊपर चले जाएंगे. So we got that, not a problem. After that, if we want to see the node after that, oh temp is over there after that, so we have taken one extra pointer, temp is equal to trav's next, that is also gone well. You continued further. अब मुझको क्या करना है, न्यू नोड के दोनों लिंक सेट करने हैं, न्यू नोड का नेक्स्ट टेम को सेट करना है और न्यू नोड का प्रीवियस ट्रैव को सेट करना है। अगर जो करना है, जो डायग्राम में ड्रॉ किया है कोड में लिखो, न्यू नोड का नेक्स्ट टेम को सेट करना है, न्यू नोड का प्रीवियस ट्रैव को सेट करना है, दैट इज डन। यू कंटिन्यूड फर्दर, व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब टू बी डन? ओ बट ये लिंक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ट्रैव का नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए और टेम का प्रीवियस
वापिस से न्यू नोड को आना चाहिए। ओके, ट्रैव का नेक्स्ट न्यू नोड को जाना चाहिए, टेम का प्रीवियस न्यू नोड को आना चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एक्स्ट्रा वी नीड टू डू इट ओवर हियर, नथिंग एक्स्ट्रा वी नीड टू डू इट ओवर हियर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सर विल इट वर्क फॉर ऑल केसेस? नहीं, जनरल केस तो वर्क हो जाएगा। स्पेशल केसेस इफ यू आर एट ऑल लुकिंग फॉर, if your list is empty or the position is invalid position, you are directly calling add first function, तो वैसे भी हमको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, that logic will still remain same। प्रॉब्लम कब आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देर आर likely chances there are chances there will be problem जब आप लोग लास्ट पोजीशन पे ऐड कर रहे हो, देर विल बी प्रॉब्लम जब आप लोग लास्ट वाले पोजीशन पे ऐड कर रहे हो। सर क्या प्रॉब्लम होगा? डायग्राम ड्रॉ करो, प्रॉब्लम समझो, और बाद में कोड का सॉल्यूशन आप मुझको बताना कि व्हाट, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल केस। व्हाट इज स्पेशल केस? स्पेशल केस is that adding adding on last position, or rather adding on नहीं, add after last position। so जब लास्ट पोजीशन के आगे ऐड करते हो देर विल बी सम प्रॉब्लम। तो सर प्रॉब्लम क्या आएगा? कोड आपको कोड शेयरिंग के ऊपर दिख रहा है, कोड आपको कोड शेयरिंग के ऊपर दिख रहा है, जस्ट कीप एन आई ऑन अ कोड एंड देन यू सी कि कहां पर प्रॉब्लम आएगा। मैं पूरा डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। सो यू स्टार्ट विथ लेट्स से हेड pointing to the first node 10, it is pointing to 20, this pointing to 30, this pointing to 40, all right, this is pointing to this is null, this is null। what you are trying to add? I am trying to create a new node। a नया नोड का वैल्यू है लेट्स से 50 और पोजीशन है लेट्स से 5। ये चार नोड मेरे पास ऑलरेडी है, चार नोड मेरे पास ऑलरेडी है, और पांचवें पोजीशन के ऊपर मुझको नोड ऐड करना है। सो इज इट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम? मैंने कहा ना, करके देखो, और जिस लाइन पे प्रॉब्लम आएगा उस लाइन के लिए सॉल्यूशन ढूंढो। अगर आपने कभी प्रॉब्लम ऑब्जर्व ही नहीं किया है तो सॉल्यूशन आने का कोई चांस नहीं है। फिर जब मेरा कोड खत्म हो जाएगा फिर कोई तो मुझको पक्का पूछेगा सर वहां पर वो इफ कंडीशन आपने क्यों डाला। बेटर जब मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, लुक एट द प्रॉब्लम। ओके, इट इज 50, दिस इज न्यू नोड, और दैट इज गुड। व्हाट इज टू बी डन? नया नोड क्रिएट किया, दैट वाज लाइक वेरी फर्स्ट स्टेप। देन यू वांट टू ट्रैवर्स till position -1। if you at all traverse till position -1, I guess trav will reach to this point। I understand trav will reach to this point, absolutely no issue। कोई मुझे बताएगा इन दिस केस टेम्प क्या रहेगा? अगला लाइन का आपने जो कोड लिखा है, अगला लाइन का जो आप लोगों ने कोड लिखा है, तो टेम्प, ए टेम्प इज नथिंग बट ट्रैव्स नेक्स्ट। temp is nothing but travs next, so you find that the temp in this case will be null। I hope you understand, temp is equal to null। कोड आपके सामने है, मैं अभी तक यहां तक आ चुका हूं। temp is equal to travs next, so हम लोगों ने ट्रैवर्स किया पोजीशन -1 तक, एंड देन आई एम सेइंग दैट temp is equal to travs next, which is nothing but null, which is nothing but null। okay, you continue further। now what you are saying, new nodes next, आपका अगला लाइन कह रहा है new nodes next is equal to temp and new nodes previous is equal to trav। follow that, new nodes next is equal to null, a new nodes next is equal to null, a temp मतलब null है, there is no problem। new nodes previous, new nodes previous is equal to trav। I guess इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, this is still fine। ए वैसे भी न्यू नोड का नेक्स्ट नल ही करना था, तो वो नल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू नोड्स प्रीवियस वो ट्रैव को पॉइंट करना चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लाइन। Next line is saying that travs next is equal to new node, travs next is equal to new node, travs next is equal to new node। is it what you want to do it? yes, travs next is equal to new node, this is what you want to do it। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। see the last line, what is the last line? is there any problem? is there any problem? oh, there is a big problem that temp arrow previous, temp dot previous, array, it is a null pointer exception। and then by the way, so I understand that there is a null pointer exception, लेकिन मुझको ये बताओ, as far as diagram is concerned, pay attention to the diagram। as far as diagram is concerned, अगर मुझको 50 ऐड करना है, या अगर मुझको 50 ऐड करना है तो मुझको एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए था? डू आई नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन? hello, do I need anything extra to be done?
ये नल टेम्प डॉट प्रीवियस, लिसन केयरफुली, टेम्प डॉट प्रीवियस क्या होने वाला है, टेम्प डॉट प्रीवियस वैसे भी आपको एक्सेप्शन देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इफ आई डू दिस मच ऑफ कोड, ये मैंने पहला स्टेप क्या किया है, मैंने ट्रैव को ट्रैवर्स किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कंटिन्यू फर्दर, यू से टेम्प इज इक्वल टू ट्रैवर्स नेक्स्ट, ए टेम्प इज बिकमिंग नल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार, न्यू नोड के नेक्स्ट और न्यू नोड के प्रीवियस, ए न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट और न्यू नोड का प्रीवियस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ए ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। टू बी फ्रैंक, अगर आप लोग यहां पर ठीक से देखते हो, ऑलरेडी आपका नोड ऐड हो चुका है, इज द नोड एडेड एट द पोजीशन, टेक अ लुक एट दिस, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, टू ऐड द नोड एट द पोजीशन, करना क्या था, ट्रैव के नेक्स्ट में न्यू नोड आना चाहिए था, न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैव आना चाहिए था, और वो ऑलरेडी हो चुका है, द नोड इज ऑलरेडी एडेड एट द पोजीशन नंबर 5 एज पर द एक्सपेक्टेशन। आर यू एबल टू सी दैट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वैसे भी ये जो लास्ट लाइन है, दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, जो लास्ट लाइन है टेम्प डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, दैट लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, क्योंकि वैसे भी आपको जब लास्ट में नोड ऐड करना था, तो लास्ट में नोड करना था, तो लास्ट में कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रीवियस वैसे भी आपको हैंडल नहीं करना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And if you are getting my point, then all I need to understand is that this last line is to be just skipped, just considering the special case. What is that? If temp is not equal to null, a temp is not equal to null, then and only then, just make temp dot previous is equal to new node. So this condition is for your special case 3. While if adding at the end, if adding at end, next line is not required, that is what that is what your case is, that's it. And this is will ensure that my code is working in all possible cases. अगर आप लोगों ने ठीक से नोट किया होगा, लिंक लिस्ट में ऐसे ही होता है। हाँ जयदीप इज सेइंग समथिंग। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, लिंक लिस्ट में ऐसे होता है, स्पेशल जनरल केसेस पीपल ऑलवेज अंडरस्टैंड, द कॉर्नर केसेस, स्पेशल केसेस यू नीड टू डू अ वेरी रिगरस पेपर वर्क, देन यू अंडरस्टैंड बेटर। तो जयदीप, आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमने ऑलरेडी लूप में से ब्रेक किया है, लेकिन जब उन्होंने इस लूप में से ब्रेक किया है, वी हैव इंश्योर्ड दैट ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इफ ट्रैव डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, वी केम आउट ऑफ द लूप, but due to that, Jaideep, I hope you are listening, trav.next is equal to null, I came out of that loop, and you simply say temp is equal to trav's next. Now temp is equal to trav next, so your temp, जब आप लोग यहां से लूप में से बाहर आओगे, इसका नेक्स्ट ऑलरेडी नल है, और अगर इसका नेक्स्ट ऑलरेडी नल है, इसका नेक्स्ट ऑलरेडी अगर नल है, तो हमें क्या करना है, temp is equal to trav's next, वो वैसे भी नल ही रहेगा। आई होप जयदीप यू गॉट दैट पॉइंट, ए टेम्प वैसे भी नल रहेगा, और अगर वो नल रहेगा तो हाउ नल डॉट प्रीवियस विल वर्क, एंड आई इवन डोंट नीड दैट लाइन जब आप लोग प्रीवियस चेक कर रहे हो तो, एंड दैट इज द रीजन दिस चेक इज देयर। सो दिस स्पेशल केस 3 के लिए मैंने ये दोनों लाइंस ऐड की है, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट यहाँ पर भी मैंने स्पेशल नंबर 3 लिखा है, यहाँ पर भी मैंने स्पेशल नंबर 3 ही लिखा है, क्योंकि ये दोनों कोड एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। द हाफ वे वी हैव हैंडल्ड ओवर हेयर एंड द हाफ वे वी हैव हैंडल्ड ओवर हेयर, यहाँ पर हाफ वे क्या हैंडल किया है, ताकि वो आगे वाली पोजीशन पे जाके उसको यहीं पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए, दैट इज हैंडल्ड एट दैट प्लेस। एंड देन जब temp डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, ये यहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आ जाए, दैट इज हैंडल्ड ओवर हियर। आई होप जयदीप आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम नाउ। और कुछ मोहन का कुछ प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, विल टॉक अबाउट लाइन नंबर 125। लाइन नंबर 125, टेक अ लुक एट द डायग्राम, टेक अ लुक एट द डायग्राम। मोहन, यू अंडरस्टैंड दैट यहां पर न्यू नोड के साथ हमें क्या क्या सेटिंग करने हैं, न्यू नोड के साथ क्या क्या सेटिंग करने हैं, न्यू नोड का प्रीवियस हमको ट्रैव को पॉइंट करवाना है, और न्यू नोड का नेक्स्ट हमें ट्रैव के बाद वाला मतलब टेम को पॉइंट करवाना है, दैट्स इट। दैट इज व्हाट लाइन नंबर 125 saying that
new node dot next is equal to temp. Even in a special case, when temp is equal to null, that line doesn't still create any kind of issue. Yes, new node next is already null. Yes, whatever you are saying is correct, Mohan, but that is only for a special case. Only for a special case. मुझको यहाँ पर null नहीं करना है. Please take a look at this. In this case, new node next is already null. You are talking about a special case over here. New node next is equal to null, and then ये वापस से लिखोगे तो वैसे भी लिख के वापस से null ही overwrite होने वाला है. Whatever you are saying is correct. But for the special case, what about the general case? General case में आपका temp null नहीं होने वाला है. जनरल केस में यू वांट टू ऐड अ नोड, आफ्टर दैट जो नल है आपको उसकी जगह पे अगले नोड का एड्रेस देना है. सो वी नीड टू हैव अ कोड ओवर हियर. आई होप दैट इज क्लियर नाउ. गुड. और भी आपको भी कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क. गो अहेड, ट्राई टू कंपाइल, ट्राई टू रन इट. ये चेक करके देखो वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू. नीचे एड पोजीशन का जो कोड था कॉल करने का, उसको कमेंट कर लो and you can try to run it once again. So let me add some nodes first. 10, 20, 30. All right. And display, yes, 10, 20, 30 is there. I want to add at the position. Let's say पहले जनरल वाला कोड मुझको थर्ड पोजीशन के ऊपर, सॉरी 3 मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, थर्ड पोजीशन पे मुझको 3 ऐड करना है. थर्ड पोजीशन पे मैंने मुझको 3 ऐड करना है. सो यू फाइंड दैट 10, 20 थर्ड पोजीशन के ऊपर मैंने 3 ऐड कर दिया. यस, इट इज वर्किंग वेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट इफ आई एम ट्राइंग टू ऐड बियॉन्ड द पोजीशन. अच्छा, वो तो हमको चेक करना चाहिए था, जिसके लिए अभी इतना राड़ा कर रहे थे हम लोग. सो ऐड एट पोजीशन, adding a new element, let's say 50, and I'm saying that position is equal to 10. Position is equal to 10. चार नोड के लिंक लिस्ट में position is equal to 10 है ही नहीं, right? So in this particular case, it should be added at the end. ऐसा हमारा कहना था. So you find that yes, already चार नोड थे. On a fifth position, I find that 50 is added. So look like the code that I had written is working well. Go ahead, copy paste, run it, check if it is working. Any special cases that you want to confirm, सर ये कोड चलता है, इस केस में नहीं चलता है, आप डेटा एंट्री करो और आप चेक करके देखो. I hope that is okay. Trav's next is nothing but 10. Good. So we were talking about adding a node at a given position. Now let us just complete the formalities, rest of the formalities, which are saying that I want to delete the node at the given position. Oh, how do you want to delete the node at a given position? So delete the node at a given position, or for that sake, I'll simply say delete first. पहले वो वाला delete first वाला फंडा clear कर दे. So it is delete first, and how it goes. Let me go ahead, delete first. I guess ये इतना ज़्यादा complicated नहीं रहना चाहिए. Let's see. It is 10, 20, 30, 40, and yes, this is going well. Hey, what is to be done? अगर मुझको पहला वाला नोड डिलीट करना है, what all changes I need, this node is to be deleted. But if this node is to be deleted, what all changes should happen? Can you take a look at the code? Look at the diagram first. What all changes to be done over here?
क्या होना चाहिए? इन दिस केस क्या होना चाहिए? Obviously, head should start pointing to the second node. Head should point to the second node. और कुछ होना चाहिए? Head should point to the second node. That is true. और कुछ होना चाहिए? Exactly. Since your 10 is deleted, you find that it should point over here. So there are two conditions I need to take care. एक तो पहली चीज तो head should go onto the second node. And second, now this is extra part that we need to consider where we say that इसका previous यहाँ पर आना चाहिए. That's it. तो सर और कुछ करना है? I don't think कि और कुछ करना है. Now go ahead. Something similar code already you people have written. Already you people have written into the singly linked list. Singly linked list. Okay. Yeah, Delphus code. Delphus code, there are a couple of special cases. Actually हम लोगों ने एक ही special case लिखा है. कोई बात नहीं. ठीक है. Head, make head pointing to the next node. Done. ये already है यहाँ पर. तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. And then, what is the extra step to be done? I'm saying that the second node that is nothing but new heads. A new heads previous should be null. वो ऑलरेडी प्रीवियस नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नोड कभी भी गार्बेज कलेक्ट नहीं हो पाएगा. ऑल आई नीड टू डू इज दैट head dot previous is equal to null. Head dot previous is equal to null. So will it work for all the cases? Will it work for all the cases? We can find out whether it is working for all the cases or not. Any special case to be considered over here? Yes, Abhaya, that is correct. There will be issue with this one or two cases. As far as if your list is empty, if the list is empty, if head is equal to null, then if head is equal to null, then yes, it is simply throwing an exception. Good thing is that this special case is already handled. If head is equal to null, then throw runtime exception, list is empty. ये हमने already handle कर लिया है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. You go on to the next one. What if your linked list has got a single node and it is like a doubly linked list, so has got a single node where इसका next भी null है, previous भी null है, next भी null है, previous भी null है. Now in this particular case, will this code work? Please check. Will this code work if you have got a single node? If you have got a single node, I guess there will be problem at a place. कौन से केस में प्रॉब्लम आएगा? I believe head is equal to head dot next में शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा, but head dot previous, oh, head dot previous is equal to null, this will create a problem. क्योंकि जब आप लोग कहोगे, have a look at this, जब लोग कहोगे head is equal to head dot next, head will become null. अगर आपने कहा head is equal to head dot next, head will become null. And if head become null, then null's previous, it will give me null pointer exception at that line. So I understand that this is not a good idea that I need to do. So I need to consider one more special case. What is one more special case? If list has single node, if list has single node, I say that make head null. That is what all I need to do it. So simply say that head is equal to head next. Hey, what is the meaning of this? नहीं सॉरी, ये हम लोग सर्कुलर नहीं कर रहे हैं. हेड डॉट नेक्स्ट ये सर्कुलर नहीं चल रहा है अपना. हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू null. Head dot next is equal to null. It simply means that this node is a single node in a list, and if it is a single node in a list, go ahead, write it head is equal to null. Head is equal to null. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. This is nothing but your Delphus code. Again, right? अभी लीनियर में भी हम लोगों ने, सॉरी सर्कुलर में भी हम लोगों ने ये वाला स्पेशल केस कंसीडर किया था. सर्कुलर में हमने दो स्पेशल केसेस कंसीडर किए थे. एक तो लिस्ट एम्प्टी होगा तो वो दैट इज वन स्पेशल केस, एंड इफ यू हैव गॉट अ सिंगल नोड दैट वाज लाइक वन मोर स्पेशल केस दैट वी हैड ऑलरेडी सीन. ओके, एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट Delphus, you can just check whether everything is going well. You can add few nodes and you can test it. Sorry, 3
and 30. 8, 10, 20, 30, it is going good. Let me say del first. 5, del first, 10 is deleted. What happened? Yes, 10 is deleted. Again, del first, 5. Again, 20 is deleted. Or a del first, this is like a single node, special condition we are talking about. I guess something we have done wrong. Something that we had done wrong. What happened? अच्छा else part लिखना रह गया. Oh, sorry. General case has to be written in a else part. Silly mistake. Very silly mistake. I hope you people got the point. Yes, else रह गया. That was a mistake. No problem. फिर से एक बार ट्राई करते हैं. आप लोग भी ट्राई करो. Go ahead. And what you are trying to do is that add last. So 3, 10, 3, 20. बस बहुत हो गया. Display 10 and 20 is there. 5. Del first. Display 5. Done. It is still there is error. हाँ, display reverse need to be modified. Yes, Shubham, whatever you are saying is correct. ये आपका forward display में ज्यादा problem नहीं आ रहा है. Your forward display still going good. Reverse display में हम लोगों ने special case consider नहीं किया है. Please note, जो forward display किया था उसमें कोई problem नहीं है. This code has done well. Forward display is working well. Reverse display empty condition was not checked. Reverse display में empty condition is not checked. अगर आपने note किया, and that is the reason it was giving me the exception. So probably I should have checked it earlier. What is that? If head is equal to null, if head is equal to null, just say return. Or if it is like an empty list, special case, if empty list, nothing to do, return. Chalo, go ahead, run it. Yes, Pankaj, whatever you are saying is correct. Empty is not handled over there. Can you please try it? Check it if it is working. And after this, we will go on to the last function for today. Working fine? Good. Thanks, Jaideep, for confirming. I'm hoping that a lot of people they found that this is going too heavy, sir. आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, and we find that sir आज बहुत हम लोग link list पढ़ लिया. If you at all find that, then I would only say that this is a prerequisite of our course. You might have done into any other language. कोई Java is not a prerequisite, but I'm very sure you might have done in a C, you might have done in C++ or any language. Data structure was a prerequisite of this course. अब already ideally I should not have spent more than 4 hours on a linked list. वैसे कल हम लोगों ने 2-2.5 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए. आज वापस से ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का लेक्चर है, एंड वी हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट एंटायर सेशन ऑन टू द लिंक लिस्ट. अब इससे ज्यादा अगर मैं स्लो करूंगा, then there are likely chances are that we will not be able to justify the topics on like an advanced linked list. और वैसे भी मैंने बताया ना, मैं कितना भी स्लो किया, that is not a solution to the problem. Solution to the problem is only one. If you are at all finding it heavy, doing papers work by yourself. लिंक लिस्ट खुद से पढ़ो, मुझको पढ़ाने के लिए मत बोलो. जो टेक्निक मैंने आपको बताया, just sit with paper, pencil and your computer, do paper work, come up with this. तो जो कुछ भी हम लोगों ने इस क्लास में किया है वो आपको खुद को करना चाहिए. जिस दिन आप ये खुद से कर पाओगे, you will find that, oh, this is very easy job. I hope you people are getting my point. नहीं तो आप बोले सर आपको कैसे पता चला? We are finding it very heavy. When class was started, there were around 340 students were there. Almost 340-45 students were there today. So almost 20-25 people are no more there. So it look like hoping या तो उनके घर पे लाइट चला गया होगा, उनका नेट गया होगा, या फिर उनका लिंक लिस्ट गया होगा. I really don't know. कुछ ना कुछ तो गया होगा, that is for sure. But if at all you are finding that this is going heavy, please do the paperwork.
do the paperwork and come up with your own solution. And I'm very sure your solution will be similar to mine. Similar, I'm not saying that exactly same. There can be alternate options available that are absolutely possible. I hope you people are understanding what I'm trying to say. And if it is so, we will go ahead. We will go ahead and talk about, as I said, that we'll go on to the last part, last demo that I want to do it over here. What is the last demo that I want to do it over here? The last demo that I want to do it over here, delete at a position. And this is very interesting kind of code. Very interesting kind of code. Let us do that much and you find how and why it is interesting. See it carefully. If you have a little head pointer pointing to the first node, continue. This is pointing to 20, this is pointing to 30, this is pointing to 40, null. 40 is previous, 20 is previous, this is done. You continue further. What exactly you want to do? Let's say I want to delete a node at the third position. Oh, this is a node that I want to delete. So what should be my very first step? What should be my very first step? Obviously, I want to traverse up to that particular node. I want to traverse up to that particular position. So I traverse up to that position. Now, good thing over here, please pay attention. Good thing over here, in my opinion, there is no need that you have a temporary pointer over here. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक टेम्पररी पॉइंटर लिया था और वो क्यों लिया था क्योंकि हमको पीछे के नोड का नेक्स्ट मॉडिफाई करना था और हमें ऐसा कुछ तो करना था एंड दैट इज द रीजन हम लोगों ने उसके पीछे एक टेम्प पॉइंटर उसके पीछे लेके गए थे नाउ यू रियलाइज दैट ये करने की अभी जरूरत नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज ईच नोड हैज गॉट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एज वेल एज पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड अगर आपके पास ट्रैव है तो ट्रैव से आपको प्रीवियस नोड ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा एम आई करेक्ट इसको आपको ऑटोमेटिकली प्रीवियस नोड मिल ही जाएगा जस्ट बाय सेइंग ट्रैव डॉट प्रीवियस यू आर एबल टू एक्सेस द प्रीवियस नोड तो अलग से टेम्प का पॉइंटर चलाने की कोई जरूरत नहीं है ओके दैट इज गुड एंड देन नॉट ओनली दैट आपको ट्रैव का जो नेक्स्ट है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा ये जो 40 है 40 के प्रीवियस में आपको 20 का एड्रेस डालना पड़ेगा ए 40 के प्रीवियस में आपको 20 का एड्रेस डालना पड़ेगा दैट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू नीड टू डू राइट सो आपको दो चीजें करनी है सो माय फर्स्ट थिंग हैव अ लुक एट दिस व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ट्रैवर्स till position traverse till position is the first thing and after that then what is that the previous see it carefully what I'm writing previous nodes next should point to to traverse the next I hope you are getting the point what I'm saying is that ये जो 30 है 30 के प्रीवियस नोड का नेक्स्ट प्रीवियस नोड है 20 उसका जो नेक्स्ट है दैट शुड पॉइंट टू द ट्रैव्स नेक्स्ट that should point to the travs next right and the second thing go ahead the next nodes previous to travs previous node a travs previous node means again what I'm saying please pay attention ये जो ट्रैव आपको यहाँ पर दिख रहा है इस नोड के जो भी आपका नेक्स्ट नोड है नेक्स्ट नोड आपका 40 द 40 का जो प्रीवियस है ए 40 का जो प्रीवियस है दैट शुड पॉइंट बैक टू दिस राइट सो नेक्स्ट नोड्स प्रीवियस 40 का जो प्रीवियस है वो ट्रैव के प्रीवियस नोड को ए ट्रैव का प्रीवियस नोड मतलब 20 को पॉइंट करना चाहिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं प्लीज पे अटेंशन और कुछ गड़बड़ लग रहा है तो अभी बताना कोड लिखने के बाद में कंफ्यूज मत होना व्हाट आई एम सेइंग यू ट्रैवर्स टिल द पोजीशन सो यू कैन स्टार्ट आपको टेम्प नोड की कोई जरूरत नहीं है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड देन यू कैन ट्रैवर्स टिल द पोजीशन सो आई गॉट द पॉइंटर टू द नोड टू बी डिलीटेड इफ दिस इज द नोड टू बी डिलीटेड व्हाट आई नीड टू डू इस नोड का जो प्रीवियस नोड है इस नोड का जो प्रीवियस नोड है इसका जो नेक्स्ट है
इसका जो नेक्स्ट है, इट शुड पॉइंट टू द ट्रैव्स नेक्स्ट नोड, इट शुड पॉइंट टू द 40। सिंपल भाषा में 20 के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए। सिंपल भाषा में 20 के नेक्स्ट में 40 आना चाहिए। सो आई एम सेइंग दैट प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में ट्रैव का नेक्स्ट मतलब ये आना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, जो 40 मेरे को दिख रहा है, 40 के प्रीवियस में 40 के प्रीवियस में वापस से 20 आना चाहिए। मतलब जो मतलब जो नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है, ट्रैव के नेक्स्ट नोड, ए ट्रैव का नेक्स्ट नोड मतलब 40, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, दैट शुड पॉइंट टू द ट्रैव्स प्रीवियस नोड, that should point to the Trav's previous node, which is nothing but the 20. This is what all you need to do. That's it. This is the only code that you need to write. So is it so? Yes, it is so. Nothing much is there. Nothing much is there. Yes, Malika, that is correct. नहीं, not correct. Previous next is equal to Trav's next. ये ठीक है. Trav's next previous is equal to Trav's previous. Malika, your second line is wrong. Okay, you just go back. You just go back and you try to write it like this. Whatever that you are saying, why don't you try it once again? So delete at a given position, delete at a given position. I don't want any temp pointer. I do not want any temp pointer. I just want to traverse till the position. I just want to traverse till the position. Yes, I traverse till the position. Trav is equal to trav dot next, and I reach to that one node. Once I traverse till the position, now what I'm saying is that, let me write it over here. हाँ, क्या कह रहे थे हम लोग, ट्रैव के ट्रैव्स previous nodes, a trav's previous nodes next to trav's next node. Trav's next node is the first thing, and second we are saying trav's next nodes previous to trav's previous node. It done. You go ahead and start doing it. Travs, what you're saying, previous node. Trav.prev is nothing but the previous node. Going back to the diagram, trav.previous is nothing but, I'm talking about the node 20. I'm talking about the node 20. Node 20 का जो next part है, node 20 का जो next part है, okay, let us go ahead. मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, node 20 एक वर्ड लिख रहा हूँ. ट्रैव नेक्स्ट का जो प्रीवियस नोड है 20 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कहां पर पॉइंट करना चाहिए, ट्रैव के नेक्स्ट नोड में. वो ट्रैव का नेक्स्ट नोड कौन सा है, वो 40. सो वो यहां पर पॉइंट करना चाहिए. ओके, इफ यू आर सेइंग सो, गो अहेड, राइट इट ट्रैव डॉट नेक्स्ट. ऑल राइट, यू कंटिन्यू फर्दर. अब आप लोग क्या कह रहे हो, ट्रैव का जो नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है, ये ट्रैव का जो नेक्स्ट नोड है, इट इज 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है, 40 का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो कहां पर पॉइंट करना चाहिए, इट शुड पॉइंट बैक टू द ट्रैव्स प्रीवियस. It should point back to the Trav's previous. That Trav previous is nothing but the 20. Okay, that is good. So you simply say that Trav's next dot previous is equal to Trav's previous. That's it. So और कुछ करना है? If there is no special case, then कुछ नहीं करना है. If there is no special case to be considered, कुछ नहीं करना है. You are able to delete a node at a given position. So are you sure? मैंने कहा ना, except the special case, this should work. Except the special case, it should work. Let's go back and try to run this. Let me add a node 10. Let me add a node 20. Let me add a node 30. Let me add a node 14. And then I'm displaying, yes, 10, 20, 30, 40. Things are going good. What is the next job to be done? Next job, I want to delete, let's say, node at the third position. 7, and I'm trying to delete a node at the third position. So I guess 30 it was. 30 is deleted. Oh yes, you find that 30 is deleted. Well, there is no problem. Sir, अगर मैंने पहले पोजीशन का नोड डिलीट किया तो will it work? Yes, it will also work. आप चिंता मत करो. 10 is deleted. So you find that now it is 20 and 40. तो सर प्रॉब्लम कहां पर आएगा? प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर आएगा
जहां पर आप लोग लास्ट नोड डिलीट कर रहे हो, जहां पर लास्ट नोड डिलीट कर रहे हो। हमारे केस में लास्ट नोड इज 40 एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिलीट 40 देयर विल बी प्रॉब्लम, there will be problem. Let's see what problem that you see. A null pointer exception. Good thing, let's see that I want to delete at the second position, and here you find that there is a issue, there is a problem with the null pointer exception, and then it is behaving bit abnormally. So ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग लास्ट नोड को डिलीट करने की कोशिश करते हो, then there going to be a problem. See that if we have got like a head is pointing to 10, this is let's say 20, this is let's say 30, okay, this is null, this is null। जो कोड आपने लिखा है उस कोड के ऊपर फोकस करो। You talk about a you traverse till this, you traverse till this, so you traverse till the node, I traverse till the node, what is the next job to be done? Now you are saying that इसका जो प्रीवियस है, इसका जो प्रीवियस है, इसका प्रीवियस है 20, 20 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, 20 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इट शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट, ए नेक्स्ट तो नल है, इसका नेक्स्ट तो नल है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस विल स्टिल वर्क। बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन अ नेक्स्ट लाइन। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑन अ नेक्स्ट लाइन? ये जो 30 है, अब आपको क्या करना है, 30 का आपका अगला लाइन का कोड क्या लिखा आपने, नेक्स्ट नोड्स प्रीवियस टू द ट्रैवर्स प्रीवियस। वो 30 का जो नेक्स्ट नोड है, ये 30 का नेक्स्ट नोड कोई है क्या? डू यू हैव एनीथिंग इन 30 नेक्स्ट? सॉरी, यू डू नॉट हैव एनीथिंग इन 30 नेक्स्ट। 30 नेक्स्ट इज नल। अगर नल का अगर आप लोग प्रीवियस एक्सेस करोगे, अगर आप लोग नल का प्रीवियस एक्सेस करोगे, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन ओवर देयर इटसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और वैसे भी ये वाला नोड अगर आपको डिलीट करना है तो अगले लाइन की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों को एडेड पोजीशन वाला जो लास्ट वाला स्पेशल केस अगर आपको समझ में आया था, एग्जैक्टली अब जो लास्ट वाला आपको प्रॉब्लम समझ में आया था, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इज देयर। सो आई एम सेइंग दैट इन अ स्पेशल केस, if it is the last position, if it is the last position, you need not to worry about. So what I'm saying is that special case number 3, if trav dot next is equal to null, if trav dot next is sorry not equal to null, then and only then you want to delete this. So I'm saying that special case number 3 जो ऊपर लिखा था उसका continuation नीचे है, what is that, while deleting last node, while deleting last node, skip next line, next line, so उसकी कोई जरूरत नहीं है, next line is not needed, next line is not required, that is something in front of you। सिमिलर कमेंट मैंने नीचे ऊपर एडेड पोजीशन जो था मैंने वहां पर भी लिखा है, सो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड यू विल फाइंड दैट इट इज एग्जैक्टली सिमिलर केस वी हैव फॉलोड वंस अगेन। आई बिलीव दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सर अभी क्या बचेगा, हम लोगों ने एक एड लास्ट बच गया, दैट एड सॉरी डिलीट लास्ट। सो अगेन दैट इज योर लैब असाइनमेंट, लैब असाइनमेंट व्हाट इज दैट, डिलीट लास्ट, ये आप लोग करो। और एक चीज, जो लास्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। व्हाट इज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट? वेर यू सिंपली से दैट कि फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, डायग्राम आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, एंड लास्ट नोड्स नेक्स्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। What is the meaning of this? It only means that it only means that in this whole code, जहां जहां पर आपको लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ा था, इस पूरे लिंक लिस्ट में, इस पूरे कोड में जहां जहां पर आपको लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना पड़ा था, टू बी फ्रैंक, जब लोग डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करते हो, आपको ये ट्रैवर्सल नहीं करना पड़ेगा। जब लोग डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट करते हो, आपको ये ट्रैवर्सल नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन अ लास्ट नोड। So how do I directly jump on last node? It is a doubly circular. So simply saying head dot previous, simply saying head dot previous, it will take you to the last node. So ये जो आपका पूरा लूप था, ये पूरा का पूरा लूप स्किप हो जाएगा। That's it. So I'm going to give it as again a work for you. अब आपको जो सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट, सॉरी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट आज आपने पढ़ा है, आपको उसका पेपर वर्क करना है, उसका कोड बनाना है। डबली लिंक लिस्ट जो किया है उसका पेपर वर्क करना है, उसका कोड बनाना है, और बाद में डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट
Again, go ahead. It is just again a pointer management. जिसने जिसने सर्कुलर लिंक लिस्ट ठीक से किया है, जिसने डब्ली लिंक लिस्ट ठीक से किया है, ideally that person should never have a trouble for a doubly circular linked list. So again, don't go for even code level. Do the paperwork. You'll automatically understand कि आपको जहां जहां पर traversing till last की जरूरत है, that part is actually skip. Simply saying head dot previous, you are jumping there. बचा हुआ code, it is always a combination of a doubly and a circular. Doubly and circular. और आई नो दैट ये सब कुछ करने के लिए आपको टाइम लगेगा, एंड दैट इज द रीजन जब मैंने लेक्चर्स प्लान किए थे, मैंने प्लान ऐसे किए थे कि पहले 3 दिन में हम लोग लगभग लिंक लिस्ट तक पहुंच जाएंगे, और आगे सैटरडे संडे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा. आई एम होपिंग दैट you will be utilizing your Saturday and Sunday for doing these 3 linked lists: singly circular, doubly, and doubly circular. Paperwork and then coding, go ahead, do that. If any doubts are there, Monday we will discuss that. Monday we will discuss that. So now, by design I have ensured that you will get enough time. लेकिन टाइम उनके लिए है जो लोग उसको यूटिलाइज करते हैं. इवन द पर्पसफुली कल के लेक्चर में मैंने सिंगली लिंक लिस्ट खत्म किया था, सो दैट बाय व्हेन यू कम डाउन टू द सेशन यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि चलो सिंगली लिंक लिस्ट का सर पूरा पेपर वर्क हो गया, नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर. सो दिस लेक्चर शुड नॉट टेक मच ऑफ टाइम. एक्चुअली दिस हैज टेकन मच मोर टाइम देन आई वाज एक्सपेक्टिंग. वैसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉकडाउन में मेरे साथ ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर एक बार किया हुआ है, एंड देन दे फाइंड दैट ओके सर अभी आप बहुत स्लो जा रहे हो. इट इज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स, नथिंग मच आई कैन डू. एनीवे, इतना काफी है, ऑलरेडी बहुत हो चुका है. इफ एनीवन हैज गॉट डाउट्स दे कैन वेट. रेस्ट ऑल दे कैन लीव. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे. या प्लीज पेपर, हाँ पेपर वर्क शुड मेक इट क्लियर, नो डाउट ऑन दैट.